standing ovation with a huge round of applause. You may all take your seats. अतिथि देवो भव कहती ये भारत की धरा स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा. A very good morning, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to our distinguished guest, Honorable Chief Guest, Professor S. Farooq, President, Himalayan Wellness Company. Guest of honor, Dr. T.P. Unyal, Joint Director, Uttarakhand State Council for Science and Technology, UCOST, Dehradun. Dr. H.S. Chavla, former Dean and Division Head, Genetics and Plant Breeding, former Nodal Officer, Intellectual Property Management Center, Pantnagar. Dr. Shelja Pant, Principal, Dolphin PG Institute of Biomedical and Natural Sciences. Professor Varsha Parcha, Chairperson, Research Advisory Committee, Dolphin PG Institute, and coordinator of the workshop. Members of RAC, eminent scientists, research scholars, respected HODs, senior faculty, and dear participants. I am Ms. Prerna Verma, Faculty, Dolphin Institute. On behalf of organizing committee, extend my warm greetings to you all on the 2 days workshop on intellectual property rights from 10th to 11th March 2022, organized by Research Advisory Committee in association with Department of Pharmaceutical Chemistry, Dolphin PG Institute, funded by Uttarakhand State Council for Science and Technology here. I now request Principal Madam Dr. Shelja Pant to welcome Honorable Chief Guest Professor S. Farooq with the sapling. Thank you, Madam. I now request Professor Varsha Parcha to welcome our guest of honor, Dr. T.P. Unyal, with the sapling. Thank you, Madam. I now request Dr. Shruti Sharma, Coordinator IQAC, to welcome Honorable Keynote Speaker Dr. H.S. Chavla with the sapling. Thank you, Madam. As per the Indian custom of offering prayers before the commencement of any event, we now pray to Goddess Saraswati, the epitome of knowledge and wisdom. I now humbly invite all the dignitaries on the dais for lighting the deepa. Thank you all. I now invite
invite Principal Madam Dr. Sharja Pant to formally welcome the guests. A very good morning to one and all present here. On behalf of Dolphin PG Institute, of Biomedical and Natural Sciences and the organizing committee of the workshop on intellectual property rights, I extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais. I'm pleased to welcome Dr. S. Farooq, President, Himalaya Wellness Company, a renowned researcher of Ayurvedic remedies, chief guest of today's program. I welcome you, sir. I welcome Dr. D.P. Unyal, Joint Director, Uttarakhand Council for Science and Technology. Dr. Unyal has more than 25 years of research and administrative experience. Guest of honor of today's program, and Dr. Harvinder Singh Chawla, a renowned scientist, former Dean and Division Head, Genetics and Plant Breeding, also served as Nodal Officer, Intellectual Property Management Center, Pantnagar. Welcome you, sir. We are grateful to all the eminent personalities on the dais who spared their valuable time to be with us and grace this occasion. Now I take the privilege to give a brief introduction about my institute. Dolphin PG Institute of Biomedical and Natural Sciences is affiliated to HMP Garhwal Central University, Srinagar. It is accredited by NAC with grade B++ and recognized by UGC under Section 12. Institute offers job-oriented undergraduate and postgraduate programs in the field of life sciences, biomedical sciences, education, and commerce. Conferences, workshops, hands-on training, guest lectures are regular feature of the institute to update the students in the latest technology and the concept of science. This workshop on intellectual property right is being organized by Research Advisory Committee of the Institute in association with Department of Pharmacochemistry and Chemistry. We thank UCOST for their guidance and financial support to conduct this workshop. This workshop is designed with the aim to create awareness about IPR in the young minds and will explain the nuances of the intellectual property rights. I'm sure all the participants will be benefited by this workshop on IPR. I once again welcome the dignitaries on the dais and all the participants and wish this program a great success. Thank you and welcome you all. Thank you, Madam. I now request Professor Varsha Pacha, Coordinator and Organizing Secretary of the program, to brief us all on the concept of this 2 days workshop. Thank you, Prerna. Very good morning to one and all. Honorable Dr. S. Farooq, President, Himalayan Wellness Company, Chief Guest of the event, Dr. D. Puniyal, Joint Director, UCOS, Guest of Honor, Dr. H. S. Chawla, former CEO, Nodal Officer, IPC, Pantnagar, and Consultant, IPR in Agriculture, Dr. Sharja Pant, Principal, DIBNS, Dr. Shruti Sharma, Coordinator, IQAC, Additional Director, Mr. Sunil Kaul, various HODs, faculty members, students, delegates, researchers from different organizations. On behalf of management, DIBNS, I feel privileged to once again welcome you
to this 2 days IPR workshop. Indeed, a very proud moment for all of us. When we have galaxy of stars, the eminent personalities in the premises of AIBNS after a long gap of 3 years, really, after COVID standstill, everything was paralyzed. So in the premises, we are having such galaxy of dignitaries. Really, we are honored to have you all here, sir. One characteristic I would like to share here that all the dignitaries who are on the dais are most humble, composed, and eminent personalities which I have ever met in my life. We are honored to have you all here, sir, on the stage. You spared your valuable time and accepted our invitation and became a part of this UCAS funded workshop to make it a success. My association with Dr. Farooq is more than 2 decades when I was a young researcher and also in managing a journal, University Journal of Phytochemistry and Ayurvedic Science, of whom he is chief editor. यहाँ मैं आपको ये बताती चलूं, सर एक बहुत इमिनेंट पर्सनैलिटी है, इमिनेंट रिसर्चर है, मगर साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी है। और जो भी उनसे पहले मिलता है वो उनका उन्हीं की जुबान में दीवाना हो जाता है। और आई होप आज भी आपको कुछ ऐसे कपलेट्स उनके एड्रेस में सुनने को मिले। Dr. D.P. Unyal, again a long association with him. When I was a young researcher, going for the funds to UCOS, now becoming old also, still asking for the funds again and again. Thank you very much, sir. You are always supportive, encouraging, and positive. And because UCOS has funded this workshop, we are again thankful and we hope with your encouragement and support, we are going to organize many more workshops on the related fields again and again with your encouragement. Thank you very much, sir. And now, Dr. H.S. Chavda, renowned personality in IPR, distinguished figure in DIBNS. Who else could be a keynote speaker on IPR? Because he is a founder of IPR and whole of Uttarakhand and even India, a known personality. Honored to have you here. Sir, your presence matters a lot, and I hope students will be benefited by your expertise in the area. जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये सब तो चमकते सितारे हैं। वैसे मुझे शायरी तो नहीं आती, लेकिन सर के साथ, डॉक्टर फारूक के साथ मैंने कुछ शेर याद भी कर लिए हैं, जो वो अक्सर बोलते हैं। तो एक शेर उन्हीं इन सब डिग्निटरीज के नजर करते हुए मैं बोलना चाह रही हूँ। वो ये है, यूं ही किसी को बेसबब शोहरत मतलब फेम नहीं मिलती है दोस्तों, यूं ही किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती है दोस्तों, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे, तो इनके काम अच्छे हैं इसीलिए इनकी शोहरत है। थैंक यू वेरी मच। Now coming to the IPR workshop, the very purpose of the workshop is the awareness among the young budding minds, researchers. And you know, higher education, we have a part and parcel research and other related activities, and we want all this to get converted to a fruitful product. And here comes the role of IPR. Very, very important role we have to have with us. So budding minds, we'll be talking here about intellectually property rights, overview of the theme, whatever we are going to have, innovations, patents, copyrights, and I hope all of you will be benefited by this. Technical session will be addressed by Dr. H.S. Chavda. We will be speaking on overview of IPR. Later on, we will be joined by a virtual lecture by Ms. Shalaka. She will be talking about ABCD of IPR, especially the law part of it. Post lunch, we will be joined by Dr. A.C. Rathore, Principal Scientist, ICAR, HSWC, Dehradun, speaking on role of IPR in agriculture, a very, very important topic. UCOST has always played a vital role in sensitizing Uttarakhand on IPR, and we'll be listening from Dr. Aparna Sharma, scientist UCOST, on second very day.
followed by lecture by Mr. Himanshu Goyal on very important part, that is plagiarism, and especially in the research. You are communicating papers, and now it has become a very important part that you should not have a plagiarism in this, and the similarity what you cut paste, and students especially they do this cut paste, so this is not allowed, and that's why this special lecture was requested to him to talk on plagiarism and copyrights. He is also a resource person because we are running an add-on course on IPR, so he's a resource person in that also. He'll be also talking on the second day where we'll be having an interactive session also and a questionnaire. Whatever you learn, because the aim of the workshop is to learn from the lectures also. So we'll keep your brains tight also. You will have a questionnaire session also after interactive session. Solving your queries, Dr. Mr. Himanshu Goyal will have a questionnaire part also, so that we come to know what you have learned during this workshop. To motivate students, researchers, we do have a poster presentation, and best posters, 5 best posters will be awarded cash prize of rupees 1000 during the valedictory session. I am sure the very purpose of workshop will be achieved. And once again, on behalf of management DITNS, thank you one and all, which is directly or indirectly, directly the organizing committees and the support from the students, from the different persons who are working behind the scenes also. So thank you once again. You are involved in the workshop so that this becomes a success. Thank you once again. Thank you. Thank you, madam, for your appreciation. We are honored by the presence of Dr. D.P. Unyal, Joint Director UCOST, with us today. It's my privilege to introduce you, sir, to one and all. Dr. D.P. Unyal has more than 25 years of research, teaching, and administrative experience in the field of science and technology. He worked in Zoological Survey of India for more than 10 years in various capacities and completed 14 major research projects and is one of the pioneer officer of UCOST. He is also an expert on environmental impact assessment and is an EIA team member for Ministry of Environment and Forests. He has published one book and edited 4 books, 58 research papers in national and international journals, as well as written 8 popular articles. Dr. Niyal guided 15 master's degree scholars and is currently guiding 2 research scholars leading to digital degree. He has delivered invited talks at FAO, Italy and University of Dresden, Germany. He is also an expert of Project Review Committee for Department of Science and Technology, Ministry of Environment and Forest, and Uttarakhand Biodiversity Board, State Biotechnology Program, and State Pollution Control Board. Dr. Unyal is a visiting faculty in various institutes and universities. He is also an editorial board of 5 journals and 2 Hindi magazines, and has organized 4 international seminars, more than 50 national seminars, conferences, chaired 40 sessions, and presented paper in 6 international seminars and 45 national seminars. He has also attended 6 training programs related to biodiversity and 2 related to science communication. Currently at UCOST, Dr. Nyal is in charge of Regional Science Center, externally funded project Science Popularization and Nasi Uttarakhand chapter. Dr. Nyal is also a fellow of Indian Academy of Environmental Sciences, co-opted member of National Academy of Science India, and a life member of Indian Science Congress Association, Wildlife Preservation Society, Indian Science Writer Association. Dr. D. Punyal has received Young Scientist Award, Silver Medal by Ministry of Youth Affairs, Government of India, and Best State Exhibition Coordinator in the 100th Science Congress. I now humbly invite you, sir, for your address. Thank you, madam. आज का जो 2 दिवसीय जो कार्यशाला है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि वर्षा मैडम ने अपने
एड्रेस में हम सभी को अवगत कराया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो अवेयरनेस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे बीच डॉक्टर एस फारूक साहब जो कि प्रेसिडेंट है हिमालयन ड्रग्स कंपनी देहरादून के, और सर पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं सीआईआई के। सर से पहली मुलाकात मेरी सीआईआई का जब हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे कोलैबोरेटिव मोड में, तो इन्वायरमेंट समिट जो अभी भी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, उस समय सर प्रेसिडेंट थे। और क्योंकि मैंने भी डीएवी कॉलेज देहरादून से अपना मास्टर्स किया और सर भी वहीं के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग वहाँ के भी अलुमनी हैं। और साथ साथ सर के साथ हमारा जो यूकॉस्ट परिवार है, सर उसी के एक हिस्सा हम लोग मानते हैं। समय समय पर सर हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। तकरीबन 2 वर्ष हुए सर से फिजिकल मोड में मुलाकात नहीं हो पाई, और आज आपसे मुलाकात हुई है, ये हमारा सौभाग्य है। और हम लोग के यहाँ बायोडाइस की बात, अगर आप लोग मेरे ख्याल से साइंस सेंटर सभी ने विजिट किया होगा, यूकॉस्ट में आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिम्पोजियम में जरूर आए होंगे, तो सर का गाइडेंस हमारे को बायोडाइवर्सिटी पार्क को बनाने में भी मिला। वहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट आप लोग देखते हैं उसकी गाइडेंस सर की तरफ से ही थी। तो मैं मंच से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ सर सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहते हैं, और कभी भी किसी की हेल्प करते हैं तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपनी तरफ से। और इसके साथ साथ सर एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, जो अभी मैं भी बहुत देता हूँ सुनने के लिए सर को कि सर आज नया क्या सुनाएंगे, क्योंकि बहुत अवसर मिला है मुझे सुनने को सर को। सर आज कुछ नया सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा सर। आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट टू यू सर। डॉक्टर चावला साहब जो कि मेरे पुराने मित्र भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, और हम लोग अनेकों कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में साथ रहे हैं। मेरा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं जिस समय यूकॉस में हम लोगों के पास आईपीआर सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, तो उसका पहला इंचार्ज मैं ही था। और उस समय हम लोगों ने सर के साथ काफ़ी मिलकर काम भी किया। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सर का जो लेक्चर होगा, मैं तो खैर सुनूंगा ही, आप लोग जरूर बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जो ये आईपीआर है जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार हम लोग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं और कुछ भी करेंगे, आप इस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। एज ए जीके भी आएंगे आपके पास जब आप स्पेशलाइज करेंगे। और मेरे ख्याल से आपके कैरिकुलम में, क्योंकि मेरे को जिस समय मैडम वर्षा पर्चा यहाँ पर डिजाइन कर रही थी आईपीआर के लिए, तो मैं उस समय इंचार्ज था, मैडम आई थी मेरे पास, मैंने कहा मैडम मुझे समय नहीं है, मैं अपने जो कलीग हैं मिस्टर हिमांशु उन्हें डिप्यूट कर देंगे। और तो क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आपके कैरिकुलम का पार्ट भी है, बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटीज में और हर जगह अब इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वजह क्या है, वजह डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। परंतु हम लोग कोई भी चीज को बनाते हैं, उसके पीछे हम लोग सोचते हैं, नोवेल्टी होती है, कुछ आइडिया होता है, उस आइडिया को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट को कन्वर्ट जब हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और राइट्स जो होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं लीगल राइट्स, हम लोग को लीगल राइट है इस चीज के लिए, हम लोगों का एक कॉमन रास्ता है, सबका राइट है उसमें ट्रेवल करें। और जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स हैं, अलग अलग उसके राइट्स हैं, जो कि चावला साहब आपको डिटेल में बताएंगे। परंतु हम लोग केवल पेटेंट तक ही अटक कर रह जाते हैं कि पेटेंट ही शायद ऐसा कुछ है, पर ऐसा नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे पेटेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये एक कलेक्टिव राइट है, सोसाइटी को मिलता है। आप लोगों को जब लेक्चर दिया जाएगा इस पे सर इस पे डिटेल में बताएंगे। और प्लांट वैरायटी एक्ट जिसपे सर की एक्सपर्टीज है, आईसी सेमीकंडक्टर्स, ये सब चीजें हैं जो कि आपके इनोवेशन को प्रोटेक्ट करती हैं। और इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के इसके साथ साथ इसमें नोवेल्टी और जो कॉमर्शियल एंगल है वो भी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़ा हुआ है। कॉमर्शियल एंगल मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो आप उससे रॉयल्टी ले सकते हैं, आप उसे वन टाइम उसको सेल कर सकते हैं, आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं, और उससे कॉमर्शियली आप चीजों को अपने पास रख सकते हैं।
तो इम्पोर्टेंट है कि आप इस जो एंगल है इसको भी एक्सप्लोर करें। और अगर आप कहीं भी एज ए रिसर्चर आप किसी प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीबीटी अर्थ साइंसेज में विमेन साइंटिस्ट स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है, WS उसे कहा जाता है। उसमें अलग अलग कैटेगरी है, ABC ब्रेकिंग करियर भी है। अगर आपका 10 साल का इफ यू वांट टू रिवाइव कि मेरे को एकेडमिक फील्ड में या रिसर्च में फिर से वापस आना है, तो उसमें प्रेफरेंस दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीबीटी में। उसमें यही देखा जाता है कि आपने पेटेंट्स कितने फाइल किए हैं। पेटेंट्स जो होते हैं, अगर आपका एक पेटेंट है तो वो 5 रिसर्च पेपर के साथ, तो डॉक्टर साहब इफ आई एम राइट, उसको इक्वेट करते हैं, जो पेटेंट है उसको 5 रिसर्च पेपर से इक्वेट करते हैं। जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिव्यू कमेटी में हूँ, प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं हम लोग, तो उसमें यही देखा जाता है। तो पेटेंट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसको आप अच्छे से समझिए। आप छोटा से भी बच्चे अगर जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं इंजीनियरिंग में, या आप जिस भी फील्ड ऑफ साइंस को परस्यू कर रहे हैं, उसमें कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको पहले आप सर्च कीजिए। प्रायर आर्ट जिसको कहा जाता है, प्रायर आर्ट मतलब जैसे हम लोग भी यूकॉस में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो हम लोग उसको प्रायर आर्ट और सर्च करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं है, क्या ये इसमें नॉवेल्टी है, या नॉवेल्टी नहीं है तो हम लोग उसको इम्प्रूव करवाते हैं। और फिर तो ये सब चीजें आप जब अपना डेजिटेशन भी करते हैं या फर्दर आप रिसर्च भी करेंगे, तो इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। और आजकल सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। ओपन एक्सेस में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं। और जैसे प्लेजरिज्म की बात मैडम ने की थी कि प्लेजरिज्म एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप रिसर्च पेपर कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले वही देखा जाता है कि आपका प्लेजरिज्म कितना है। अलग अलग जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसमें अलग है, किसी में 5% वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, किसी में 10% करते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपके पास टूल्स भी हैं, किस प्रकार से आप उसको, तो वो भी मेरे ख्याल से आप जब मिस्टर हिमांशु यहाँ पर होंगे तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि उसको वो कौन से ओपन एक्सेस में सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किस प्रकार से इसको हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो IPR है, जो ये वर्कशॉप हम लोग यूगोस से करते हैं, इसका मेन मकसद यही है कि आप लोग इतनी मेहनत अपने इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री के लिए करते हैं, कुछ डेजर्टेशन करते हैं, तो उसमें कुछ आप ऐसे प्रोडक्ट हैं तो उसको आप पेटेंट या इसमें कोई IP राइट्स जरूर लीजिए। वो आपके इंडिविजुअल करियर के लिए भी बहुत अच्छा है और जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए भी अच्छा है। मैं पंत मैडम को बोलना चाहूंगा मैडम कि अगर बायोटेक्नोलॉजी में भी है सर, इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे तो आप इसको प्रॉपरली उसको राइट ले सकते हैं। और राइट लेने के साथ साथ इंस्टीट्यूट प्लस जो इंडिविजुअल है उसको इसके बेनिफिट मिलते हैं अगर कॉमर्शियली ये वाइबल आगे हो जाता है। IP का जो एक और करियर जो है, आप इसमें करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री इसमें एग्जाम्स को कंडक्ट करती है और आपको अटॉर्नी एज अटॉर्नी अपॉइंट करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो टाइपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, DST का विंग है, जो कि टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग के लिए बना है, वो किरण एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, रिटन एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और 1 साल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें 25,000 आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है मंथली। और कंट्री के जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पर आपको अटैच कर देते हैं, या यूनिवर्सिटीज में आप 1 साल वहां पर IP के बारे में सीखें, और उसके बाद आपके लिए बहुत सारे करियर्स ओपन होते हैं, जैसे अटॉर्नी है, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छा करियर है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इवन जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, CSIR हो, ICR हो, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके यहाँ एक एक्टिव IPR सेल है। क्योंकि जितना भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का अब सोचना ये है कि हम लोग अगर रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिसर्च पे जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी ढंग से वो वापस भी आए, और जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी को भी इम्पावर करे। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप इसको करियर की तरह आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, मास्टर्स कोर्स है, और PhD भी आप कर सकते हैं। जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग जगह पर, ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन यूनिवर्सिटीज है, ये भी आपको ऑफर करती हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज और मास्टर्स कोर्सेज। तो करियर इसमें बहुत अच्छा है।
आप फर्दर अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, यू कैन पर्सनली कम टू यूकॉस टू मी और माय कलीग्स जो IPR जो हमारा PIC सेंटर देखते हैं, आप उनसे इसमें बात कर सकते हैं। और आप बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजेशंस के जो वेबसाइट्स हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं कि इसके लिए करियर काउंसलिंग या करियर कौन सा करियर आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। मैं 2-3 चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इंडिया में अभी पास्ट हाफ डिकेड से इस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है, इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ध्यान देने का मकसद यही है कि जितने भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे आप देखें US, या अगर आपने एक शब्द सुना होगा इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें क्या होता है कितने कंट्रीज ने पेटेंट्स फाइल किए हैं, PCT एप्लीकेशंस कितनी हैं। और इसमें सरप्राइजिंगली जो US और चाइना अब लीडिंग है इन दो में। अभी सन 22 का मैं डेटा देख रहा था, तो चाइना ने करीब 5 लाख से ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए एक साल में। तो आप सोच सकते हैं कि उसका कॉमर्शियल एंगल कितना बड़ा होगा। और हम देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप चले जाएं, तो मेरे होस्ट थे प्रोफेसर थॉमस, जिनके साथ मेरा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। तो मैं उनके साथ मार्केट में गया, तो मैंने कहा कि मेरे को एक पर्स चाहिए, लेदर पर्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कि लेदर पर्स जो जर्मन या इटालियन है उसको हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफी महंगा है। और उन्होंने मेरे को चाइनीज पर्स दी, चाइनीज पर्स दिखाया कि इक्वली इक्वली अच्छा है, और हम लोग भी अब इसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं बेसिकली। तो उसका एक मतलब, साफ एक मतलब है कि जो कॉमर्शियल एंगल है, या जो मटेरियल में पेटेंट उन्होंने लिया है, या प्रोसेस पे उन्होंने पेटेंट लिया है, वो कितना बड़ा है। और उन्होंने पूरी ग्लोबल मार्केट जो है उस पे, वो ग्लोबल मार्केट पे अब वो काफी बड़ा शेयर उन लोगों का है। तो उन्होंने क्या किया है, 2 चीजें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की हैं, क्योंकि वहां पर पीपल साइंस मूवमेंट एक शुरू हुआ था लेट 80s में। क्योंकि हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर की, हमेशा से साइंटिफिक टेम्पर को उन्होंने क्रिएट किया। बेसिकली उन्होंने रियलाइज किया कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ रही हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर फोर फ्रंट में हम लोग रखते हैं, तभी हम लोग आगे जाकर बढ़ सकते हैं और अपने जो कॉमर्शियल वैल्यूज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, और स्कूल में ही साइंटिफिक टेम्पर की जो है साइंस मूवमेंट के नाम से उन्होंने स्कूल लेवल पे और कॉमन मासेस पे साइंस को सिंपल तरीके से समझाना शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने बहुत सारे इंडियन लोगों को हायर भी किया इस चीज के लिए। आपको पता होगा कि चाइनीज जो है वो अब इंग्लिश सीख रहे हैं, और 80% जो टीचर्स हैं वो इंडिया से हैं वहां पर। उनका मतलब यह है कि हम ग्लोबली अब वो जितना भी पब्लिकेशन है या वो हैं, उसमें हम लोग इंग्लिश में लिखें। और उनकी इंग्लिश इतनी बहुत अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए, पर उन्होंने रियलाइज किया है कि हम लोग इस पार्ट पे वीक है, तो हम लोगों को इस पार्ट को ओवरकम करना है। और वर्ल्ड के जो बेस्ट मैथमेटिशियंस हैं चाइनीज हैं। अगर आप देखें कि जो वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियंस हैं वो चाइनीज हैं। तो उनका जो पीपल साइंस मूवमेंट है उसने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट्स ने और जो साइंटिस्ट हैं, एक नाम आपने सुना होगा इनोवेशन फाउंडेशन, जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडेड एक एजेंसी है जो कि इनोवेशन प्रमोशन पे डील करती है। उसको बनाने के लिए प्रोफेसर सैम पेट्रोडा एक साइंटिस्ट थे, लीडिंग साइंटिस्ट थे, US में थे। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी कंट्री में आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को टेक्नोलॉजी अब्रॉड से नहीं मिल रही थी, और उसको स्ट्रक्चर करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने इनोवेशन फाउंडेशन बनाई, इनोवेशन काउंसिल बनाई, और बसंत विहार में इसका ऑफिस है इनोवेशन काउंसिल का। आप वहां पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मौर्य हैं, बहुत सारी स्कीम्स उनके पास हैं, स्टूडेंट्स से लेकर फैकल्टीज के लिए, और इवन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कुछ उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आप उनकी वेबसाइट को देख सकते हैं, पर्सनली विजिट कर सकते हैं, जाकर मिल सकते हैं उन लोगों से। और ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है उसकी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो भी पेटेंट फाइलिंग के लिए आपकी हेल्प करती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को जाननी जरूरी इसलिए है कि अगर आप सीरियसली इसको परस्यू करते हैं, अगर आप
पेटेंट्स और इसको समझ जाते हैं, तो जो आप स्टार्टअप कभी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीम्स आपको मिलती हैं, एक एंजल फंड आपको मिलता है जिससे कि आप अपने इनोवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी कंपनी आप बना सकते हैं और उसको फिर ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज को ही अब कितना बड़ा शेप मिल रही है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अभी हम लोगों ने एक वेबिनार किया था ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एंड इनोवेशन प्रमोशन पे। तो ग्राफिक कह रहा कि कुछ स्टूडेंट्स जब मैं आईपी को हेड करता था तो मेरे पास आए थे कि सर हम लोग एक छोटी सी मशीन बना रहे हैं ईसीजी की, हैंड हेल्ड हो और उसको बड़ी आसानी से, और आपको उसको अपने लैपटॉप में या अपने पामटॉप में या अपने फोन से आप उसको एंड्रॉइड जो फोन है उससे आप यूज कर सकते हैं उसे। तो बहुत सारे मेरे मन में भी डाउट्स थे, मेरे बहुत सारे मित्र मेडिकोज हैं, तो एक दिन हम लोगों ने उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म किया और शार्क टाइम में आपने देखा होगा तो उन्हें कुछ एंजल फंड अभी दिया गया और अब वो उन्होंने उसको पीसीटी एप्लीकेशन फाइलिंग पहले कर ली थी और अब वो उसको अब्रॉड में भी सप्लाई कर रहे हैं, बहुत मिनिमम जो अमाउंट है उसमें, तो बड़ा सक्सेसफुल उनका वेंचर था। तो ऐसे ही जो आप लोग भी हैं इंजीनियरिंग या कुछ जो भी परस्यू कर रहे हैं, इस चीज को प्लान कर सकते हैं और ग्लोबली आप अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं, गवर्नमेंट भी के भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे बहुत हेल्प करती हैं, तो आप उस चीज का जरूर लाभ लीजिए। क्योंकि आप अगर इंडिपेंडेंटली कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आप सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेंगे। तो छोटी छोटी कंपनीज हैं। एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा कि ट्रेडिशनली रुद्रप्रयाग में एक लेडी है मिसेस किरण, उन्होंने शुरू किया नमक का। पहाड़ में टिपिकल एक नमक बनाया जाता है जिसका कंपोजिशन, जिसमें लहसुन और ये सब जो सुपर हर्ब्स हैं जिसको कहते हैं उसको मिलाया जाता है, उसका एक अलग टेस्ट होता है। उसको उन्होंने शुरू किया, हमारे पास आई थी, डिस्कशन हुआ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ, मिस्टर नोटियाल और हम लोग सब बैठे थे। तो डाउट ये था कि ये कैसे, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कैसे वो रहेगी और इसको ऑर्गेनिक भी रहना है। फर्दर हम लोगों ने रिसर्च की, यूएस में मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है मेरे मित्र, उन्होंने कनेक्ट करवाया। और नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जैसे कि आप देखेंगे चीनी और ये चीज हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, जिसका एक डिफाइंड प्रोटोकॉल हो जाता है, वो नेचुरली प्रिजर्वेटिव हो जाते हैं, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव उन्होंने सजेस्ट किया और अब उस लड़की की कंपनी जो है वो मेरे ख्याल से 3 करोड़ ऑफ टर्नओवर है उसका अकेले ही, और रुद्रप्रयाग में करीब उन्होंने 50 लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो लेडीज हैं। और इस तरीके से मतलब छोटा सा देखिए कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से उसको वाइबल करना है, कौन सी जगह आपको जाना है, और छोटे से आइडिया को ही आप बहुत बड़ा लेके जा सकते हैं। तो जितनी सारी वर्कशॉप है इनका यही एक मकसद है। और 2-3 बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पेटेंट एक पार्ट है उसका, उसके साथ साथ हम लोग एनुअली चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस करते हैं और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के साथ साथ हम लोग स्टेट साइंस कांग्रेस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 14 कर ली है, अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं, मे बी अप्रैल में हम लोग प्लान करेंगे। वो पूरा पैटर्न होता है जैसा हमारा नेशनल साइंस कांग्रेस होती है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं और प्लेटफॉर्म देते हैं जो यंग रिसर्चर्स हैं, जैसे आप लोग एमएससी में कुछ डेजिटेशन कर रहे हैं, कुछ रिसर्चर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपने रिसर्च को शेयर करें। और आप जो हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स या जजेस आते हैं वो अपने एटलीस्ट इंडिया में तो लीडिंग होंगे ही, वर्ल्ड ग्लोबली भी लीडिंग रिसर्चर्स होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के लोग। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हमारे जो साइंस कांग्रेस है उसी में हुआ। आप स्टूडेंट्स वहां पर कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होने के बाद उससे फर्दर फाइन ट्यून किया और उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। अभी वेलकम ग्रुप जो एक बहुत बड़ा वेलकम ग्रुप है, उसमें एक रिसर्चर थी, उन्हें करीब 3 बिलियन यूरोस का एक प्रोजेक्ट मिला। 3 बिलियन, समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा और कितना कंपटीशन होगा, ग्लोबल कंपटीशन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर रावत साहब, उनसे हम लोगों ने उन्हें कनेक्ट कराया और उसको उनके प्रोजेक्ट को फाइन ट्यून किया गया
और फाइन ट्यून करने के बाद पूरा प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो ये एक मौका होता है कि आप लोग वहां पर जाकर अपने जो टॉप मोस्ट रिसर्चर है कंट्री के, उनके साथ इंटरेक्ट करें और नई नई चीजों को समझें। तो मैं रिक्वेस्ट स्टूडेंट से जरूर करना चाहूंगा कि आपके जो भी मेंटर्स हैं, आपके जो भी गाइड हैं, उनके माध्यम से आप प्लीज अप्लाई फॉर दैट एनुअली वी कंडक्ट दिस प्रोग्राम। आप उसके लिए जरूर अप्लाई करें और उस प्लेटफॉर्म का जरूर लाभ करें। और बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम करते हैं इनोवेशन प्रमोशन में। रीजनल साइंस सेंटर में हमारा एक इनोवेशन हब है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एफिलेटेड है, तो आप उसका भी जाकर लाभ ले सकते हैं। और जो प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं उसको अटेंड कीजिए कंटिन्यूसली। हम लोग शैलजा मैडम से मेरी बात हो रही थी कि बहुत पुराना आप लोगों से मेरा अफेक्शन भी है। और मेरे मेंटर साहब आज डॉक्टर अरुण कुमार साहब जो मेरे बॉस भी रहे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, आज स्वास्थ्य खराब है। अभी मेरी फोन से भी बात हुई, वो मेरे मेंटर भी रहे, तो वो शुरू से यहाँ जुड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आने में, क्योंकि एक मेरे मेंटर यहाँ पर रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च में बहुत अच्छा कर रहा है। इसके लिए मैं सारे फैकल्टी मेंबर्स को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूँगा, क्योंकि जो एकेडमिक फील्ड है उसके साथ साथ आप रिसर्च भी करते हैं, तो यंग स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि साइंस के लिए परस्यू करें। इसके साथ साथ मैं दो तीन चीजें और आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर अब्रॉड में स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीबीटी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईआईएससी बैंगलोर, ये लोग टाइम टू टाइम अपने एडवर्टीजमेंट को फ्लोट करते हैं। और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना है। उसकी मेंटरशिप भी वो अपने आप ही फिक्स करते हैं। छोटा सा एक एग्जाम लेते हैं और उसके साथ आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। आपका जो डेजिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, क्योंकि जब आप मास्टर्स के लिए या पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आप अपने जो डेजिटेशन है उसको एक शॉर्ट नोट या एक पेपर में ही पब्लिश कर सकते हैं, छोटा पेपर पब्लिश कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि उस स्कीम में मैं उसको इवेल्युएट करने के लिए मैं आईआईएससी बैंगलोर इधर जाता रहता हूँ। तो हम लोग यही देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली साउथ के स्टूडेंट्स हैं अवेयर हैं इसमें, फैकल्टी भी बहुत अवेयर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे नॉर्थ में कंपैरेटिवली जो अवेयरनेस है वो डीयू और पंजाब यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है अभी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैम से भी, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इंकरेज कीजिए इसके लिए कि आप लोग सारे इतने कॉम्पिटेंट फैकल्टी हैं, मैं पर्सनली सभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो थोड़ा सा अगर रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, करंट साइंस जैसा जर्नल है या और जर्नल है जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, और आप अपना जब पेपर पब्लिश करते हैं उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है, तो उससे बहुत मदद मिलती है। तो ये कुछ चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था कि जो वर्कशॉप है उसको आप सीरियसली लीजिए। जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे सर हैं, 45-50 साल का आपका अपना अनुभव है। आईपीआर आपने बाद में सीखा होगा, आप पहले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उसके बाद आपने आईपी, जो मेरे ख्याल से 90s में हमारी कंट्री में आईपी आया, जब हम लोगों ने बहुत सारी ट्रीटीज को साइन किया, वाइपो ने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट बैच के चावला साहब फर्स्ट बैच के आईपी ट्रेंड हैं, और हमारे डीजी सर डॉक्टर डुबाल सर साथ में आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को डिजाइन किया कंट्री के लिए। और पेटेंट के लिए जो अभी ड्राफ्ट पॉलिसी बनी है उसमें भी सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये आप वर्कशॉप की जा रही है इसको अटेंटिव रहिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, बिल्कुल हिचकिचाइए मत जो भी, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स सोचते हैं ये सही है कि गलत है। सही गलत कुछ नहीं होता है, जो आप पूछे उसका कुछ ना कुछ जवाब जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे जो मेरे मेंटर साहब थे वो जरूर कहते कि कोई भी, मैं टेक्सोनॉमिस्ट हूँ और इकोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, तो उसके बाद साइंस कम्युनिकेशन और ये सब आईटी सीखा। तो अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आप जो आपने जो सीखा है वो आप भूल जाएंगे, आप इसके बाद जाएंगे। आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सोचेंगे भी, यू आर फोर्स टू थिंक, और जब आप सोचेंगे तो उसके लिए पढ़ेंगे भी, ठीक है। और लास्टली मैं एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि प्लीज, अभी हम लोगों के यहाँ एक हफ्ता का प्रोग्राम हुआ था आजादी का अमृत महोत्सव में, आपके यहाँ से स्टूडेंट्स भी आए थे, साइंस वीक, और कंट्री के लीडिंग साइंटिस्ट हम लोगों ने इनवाइट किए थे। सभी का एक सजेशन था स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी,
कि लाइब्रेरी में कम से कम 2 घंटा जरूर बिताइए एक दिन में आप लाइब्रेरी में जाकर, क्योंकि हमारे इंटरनेट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें जो उपलब्ध हैं वो शायद सही नहीं है, क्योंकि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारा जो डेटा आता है वो सही नहीं आता है। और खासकर जो मेरे मेडिकल वाले मित्र हैं वो बड़े इरिटेट होते हैं जब मैं उन्हें बुलाता हूँ। वो जब क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स या और पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो ज्ञान है एकदम अधूरा है और इसको वो प्रैक्टिस करते हैं। अभी कोविड टाइम में मेरे मित्र हैं तो उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी के लिए हम लोगों ने कोविड उनका वो देख के कि उन्हें क्या क्या सिम्टम्स हैं, कोविड का एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। कहते हैं लोगों ने बिना सोचे समझे वो प्रिस्क्रिप्शन को अडॉप्ट किया और स्टेरॉइड खाए 3 महीने तक। उसका इम्पैक्ट सोचिए कि अभी नेचर में पेपर छपा है, जापान में छापा है, उन्होंने इंडियन और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे पूरा डेटा लिया। उन्होंने कहा कि जो 20 से लेके 30 या 40 की जो एज ग्रुप है उनमें 30% मेमोरी लॉस हो चुका है। वो लोग चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या अगर आप देख रहे हैं तो किसी का नाम नाम को रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, या प्लेस या हैपनिंग जो चीजें हो रही हैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट जरूर है कि जो चीजें आप लाइब्रेरी में जाकर ऑथेंटिक चीजों को समझ पाएंगे वो बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब मैं अपना पीएचडी रजिस्टर कर रहा था, जब मैं जेडएसआई में था, अरुण कुमार साहब भी थे, उन्होंने 6 महीने तक मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया। उन्होंने बोला साइंटिफिक रेफरेंस कार्ड्स कहते थे, शायद अब तो डिजिटल हो गया, रेफरेंस कार्ड होते थे उसमें पूरा डिटेल आता था, पेपर कौन सा है किस ईयर में है, उसके साथ पीछे की तरफ उसका एक एब्स्ट्रैक्ट पूरा हाथ से लिख लिया जाता था और वो रेफरेंस कार्ड होता था। तो उन्होंने बोला जब तक आप 30 या 40 हजार रेफरेंस कार्ड नहीं बनाएंगे और उसको मेरे को दिखाएंगे नहीं, मैं तब तक टॉपिक पे सोच नहीं सकता हूँ कि वेदर यू आर फिटिंग टू डू पीएचडी और नॉट। तो मेरी जो आदत थी लाइब्रेरी जाने की, आज भी मैं 2 घंटे बिल्कुल पढ़ता हूँ और वो लाइब्रेरी में जरूर जाता हूँ कि जो हमारे यहाँ जर्नल्स आ रहे हैं उसको मैं जरूर पढ़ता हूँ। और ये हैबिट्स आप सभी को रखनी चाहिए। आप इसको देखिए, आप ग्रेजुअली 1 महीने ही आप देखिए, अगर आप इस सब चीज को करते हैं तो आपको बहुत सारा चेंज आपको महसूस होगा। और कुछ मैं आपको जो पॉपुलर साइंस बेस्ड चीजें हैं और मैगजीन्स हैं उसके बारे में मैं सजेस्ट करूंगा। डाउन टू अर्थ जो एक है मैगजीन, उसमें आप बहुत अच्छे पॉपुलर आर्टिकल्स होते हैं साइंस बेस्ड, आप उसको जरूर पढ़िएगा। विज्ञान प्रगति है, साइंस रिपोर्टर है, छोटी सी मैगजीन आती है 15-20 रुपए की, स्टूडेंट एंड विजडम बैंगलोर से छपती है, उसमें बड़े अच्छे तरीके से साइंस को समझाया जाता है। और साथ साथ अगर आप एक हिंदू पेपर न्यूज़पेपर संडे को ही पढ़ लें, उसमें बहुत अच्छे मैगजीन्स आते हैं, उसमें बड़े साइंटिफिकली जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे लीडिंग अभी आजकल वायरोलॉजिस्ट हैं उनके आर्टिकल्स उसमें आ रहे हैं, कोविड के बारे में, वेरिएंट के बारे में, और बड़े सुंदर तरीके से वो लोग समझाते हैं, पॉपुलर तरीके से। कोई बहुत बड़ी साइंस उसमें नहीं होती है, वो केवल सिंपल तरीके से समझाते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप अपने आप तो साइंटिफिक उसमें इम्पावर होंगे भी, आप स्टूडेंट्स को भी इम्पावर करेंगे और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिसर्चर्स भी होंगे। So I'm confident that these 2 days workshop will be quite fruitful to students as well as faculty members. Thank you all. धन्यवाद महोदय आपके उत्कृष्ट संबोधन के लिए। और निसंदेह हम आपके सभी सुझावों को आत्मसात करेंगे। Dear all, Dolphin Institute is highly honored by the graceful presence of Professor S. Farooq as a chief guest in today's program. It gives me immense pleasure to introduce you, sir, to the August Council. Dr. S. Farooq, President, Himalaya Wellness Company, was born in the family of Janab Syed Rashid Ahmed, a renowned researcher of Ayurvedic remedies and a freedom fighter. Dr. S. Farooq obtained his MSc and PhD and 2 DSc degrees, one from HNB Garhwal University and one from honoris causa from Cambridge, England. Subject of his PhD thesis was study of chemical changes in cell membrane and was awarded a gold medal. The subject of his DSc thesis was newer alkaloids for therapeutic effect on infected respiratory tract along with its pharmacodynamic and kinetic studies.
He also holds a postgraduate diploma in business management. He has published and presented over 500 papers in national and international conferences and is the chief editor of the university's Journal of Phytochemistry and Ayurvedic Hygiene. Dr. Farooq is the author of Laboratory Manual of 555 Medicinal Plants and Herbal Remedies for Cough and Cold. He has written biography of his father, Aap Yaad Aati Hai. Dr. S. Farooq was nominated for Padam Shri Award in the year 2004. He is associated with several government bodies such as Member State Accreditation Committee like NAC for degree colleges in the state of Uttarakhand, Member Uttarakhand Airport Advisory Board. He is the patron of many degree colleges and schools. Okay, I now take the opportunity to invite you, sir. Honorable Principal, distinguished faculty members, Dr. Chawla, Dr. Unyal, and dear students. It is a proud privilege for all of us meeting today here physically in this COVID era, post-COVID. So we are starting now freely, and don't be scared of COVID. That time has passed. We are very fortunate that we live in India, and Indians are very strong in facing such problems. Very simple example for COVID I may give you before coming to IPR. All of us eat golgappas, pani puri. If you call a foreigner and offer him this thing, you have to tie his pants from the bottom. Otherwise, he will leave and reach there. Why? Because the virus in it, his body is not accustomed to that. Our body is immune to so many viruses. During this COVID period, no madman, insane, you would have seen was affected by the COVID. All those who were strolling on the streets were strolling at that period also. The reason was the same, that they are highly infected and immune to all these things. So in our country also, we are blessed, whatever the reasons may be, but this country faced this problem strongly, and we succeeded today. Anyhow, people took restrictions, and those who were restricted to the places, there is a couplet. I am not a shire, this I may tell you, but this is an easy way to express. इस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई ढील. इस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई ढील. कोरोना अमिताभ को रेखा का बंगला सी. Okay. Now we will come to IPR. You see,
Dr. Unyal, while addressing, he said that Dr. Farooq is associated with us in this part. He suggested us this is what is IPR. That we should know who created. There are two types of people. One who just want to feel happy that yes, I have done this. The couplet I have quoted, I have not quoted, I don't know the name who made this couplet. This is bad. This is plagiarism if I quote from my name. But he quoted, and I am happy that he quoted it. You see, education has three components. One is art of expression, and never feel shy in expressing yourself in your mother tongue. Like Dr. Unyal addressed in Hindi, very good. We should be proud of it. India is the only country in the world which is having 17 languages on its currency note. 17 languages. No other country's currency note will have this. So the first thing is art of expression. Always select a language on which you have a hold, a command on it. Otherwise, you'll say something else and express something else. There is a couplet, talaffuz ki kharabi, wrong pronunciation. Talaffuz ki kharabi, zamane ko jamana keh raha tha. Talaffuz ki kharabi, zamane ko jamana keh raha tha. पिटा आशिक फसाना का फसाना को फसाना कह रहा था. So never feel shy. If you don't know English, speak in Hindi. And in foreign countries, he has visited all of them. Number of seminars abroad, presented papers. When we go abroad, people from different countries come. And they present their paper in their language. There's no problem. It does not mean that if your paper is presented in Hindi, it will not be accepted. So never feel shy. Now, the first thing is art of expression. As he said, put questions. खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों. खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों. शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है. When you speak, then you reflect your personality. Anyone can come with a tie and suit and sit over here. But when you will ask him to talk, you see just one word of his expression. Hello. First you will come to know whom you are calling. Saab ko dena bhi. And if you want to talk to the Mali and he says hello, situation changes. Mali ko dena sab. So one word of your expression, then what you talk. Like this is a workshop on intellectual property and I talk something else, so that does not make sense. So art of expression. The first part of education is art of expression, and second is art of earning. So why this workshop is? This is for the art of earning. So if you have created something, innovated something, creation is God has created everything. You innovate. There the
intellectual property comes. There are two types of properties. One physical property, this property where we are sitting is owned by someone. Everyone is aware of it. But intellect, the thought process of yours, that is your intellect property, on which Dr. Chawla keynote address would be, if it would be in the beginning, we would have also been enriched with what he is going to tell you. So, art of earning. If you have innovated something, you should know about it. There is a couplet, एहसास के एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके कहीं जहन के दरीचों से एक शेर निकलता है. Again, it is not my couplet, but I don't know the name. This is the bad part. So you do a lot of hard work to innovate something, and people don't know, or someone may claim it. Your hard work, your intellectual property. I was talking to the vice president of India the other day, and something I said. He said, "Doctor, can I have the privilege to quote it with your name?" This is intellectual. This is the right way of doing the things. If someone has done it, please quote. You see, the biggest research in the world was a wheel. No one knows who researched it. Now, earning from that or not, that is your decision. But at least you should register what you have done. Why Dr. Onyal was saying that China has the largest number of IPRs? Because innovation is there. This tells about the country, that how much innovative work is going on in this country. And while German wallet was costlier than the Chinese one, they want to earn less, but put their name everywhere. And that country in metals, metrology, Germans are the best. Again, the IPR, they charge for that innovation. In pharma industry, again I may tell here that this Himalaya, from where I come, is a partnership firm. Mr. Manal is the chairman of this company. I am humbly associated. This company also, this is for your knowledge, that it started with just 100 rupees in the year 1930. Today we have a small unit. This is Dr. Paracha. Again, very kindly told that we are associated with this institute. Proud to be. So
this company started with just 100 rupees. And today it is 3,000 crore company. Himalaya is a name which everyone has a right to keep. Anyone can use this name Himalaya. You'll find Himalaya Bakery, Himalaya Optical, Himalaya. There is an institute here, Himalaya Public School, and the owner is known to me. And when they started this, they said, "Sir, we are so much associated with you that no other name came to my mind, and we kept this name Himalaya." Then Swami Ram, I am associated to that also. That is also Himalaya. So Himalaya is a common name, but again the trademark. Just H you can register. Reliance anyone can keep. But R is to be there. Differently designed. That will be their trademark. So innovation, art of earning, you are towards that. And you will be benefited if you do some innovative work. Books, it was told here that literature is also innovation of yours. You have a copyright for that. The books I have written, copyright of that is there. Certain books I have made it free. If someone wants to publish it, okay, you may publish. Why? It is a knowledge, everyone can share it. Certain books, I feel very proud when a little amount of honorarium comes from that. So, art of earning. But always remember about one thing, that is art of living. Never cheat anyone. This starts simultaneously from your childhood to the end of the person's life. That is art of living. जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो. They may admire. जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, और मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे. सभी 4 दिन की है चांदनी. Dr. Chawla said that I have gone to Gurdwara and there in these places. Why? Why he respects? सभी 4 दिन की है चांदनी, ये रियासतें ये वजारत. मुझे उस फकीर, उस गुरु की सी शान दे कि जमाना जिसकी मिसाल. That's why art of living. Today, kidney theft. You can't do it. Kidney theft and MS can do, but he does not know art of living. That's why he's doing this. Bribe and so many things. Art of living. Always remember this. You have innovated something, register it. As much you want, you can earn from that if it is an innovative idea. You'll get laurels. You'll get awards.
you'll get money. इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली मुझे, इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली मुझे। ऐ मां, मैंने तेरी दुआओं की तासीर देख ली। You get blessings from your parents, from the society. A little work of goodness when you do, even animals bless you. झुलसती धूप में जिसे मैंने पानी पिलाया था, वो चिड़िया रोज आती है, मुझे दुआएं दे के जाती। This you have to learn. This is the art of living. We are in India, we are Indians, we are proud to be Indians. We carry a 5,000-year-old heritage on our back. Remember it and continue. With good work, you are doing a very patriotic duty, that you are planning to go for a startup or doing a research work, innovation in anything, thoughts. Dr. Vinyal said, go to the library. You see, today in masters in certain subjects, you don't study. No course, no syllabus. What do you do then? You do research. You study the market. You discuss. You talk. That's how you come to know what in future you have to do. So I'm very happy that this 2 days workshop will enlighten you. People will come and talk about IPR. My good wishes to all of you. With this couplet, I conclude. कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम. Why I am saying so? Because more IPR should come. कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी. Thank you. I quote Dr. Ashish Raturi, graduate. आप ज्ञान के सागर से मोती चुनकर लाए हैं, अब बौद्धिकता के इस मंथन से होगा नव आकाश फलित. आप इस पथ पर ज्योति पुंज बनकर आए, आपका आभार बहुत. Thank you, sir, for your noble address. It has been a memorable occasion for all of us here at Dolphin Institute to have such a distinguished gathering of eminent personalities gracing our inaugural. To mark the event, I now request Dr. Shelja Pant, Principal, Dolphin Institute, to kindly present the memento to Professor S. Farooq. Thank you all. I now request Dr. Varsha Pacha to present memento to guest of honor Dr. D.P. Unia. Thank you all. I feel privileged in inviting Dr. K.P. Tripathi, Member, Organizing Committee and Head, Department of Botany, to propose a formal vote of thanks. Sir, please.
Good morning to you all. Honorable Chairman, Director, Principal, Chief Guest, Guest of Honor, Keynote Speaker, guest faculties, participants, my colleagues and my dear students. It is my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I extend a very hearty vote of thanks to the chairman, Dolphin Institute, Sri Arvind Gupta ji, for his blessings for the success of this workshop. I would like to thank Principal Dr. Saljapan, Director Dr. Arun Kumar, Additional Director Mr. Nagpal, Joint Director Mr. S.K. Kaur. Without their cooperation, this program would not have been possible. I deeply grateful to the respected chief guest, Dr. S. Faru, President Himalayan Drug Company Dehradun, guest of honor, Dr. D.P. Unyal, Joint Director, Uttarakhand Council of Science and Technology Dehradun, for their enlightening and motivational address, and the lectures had been very informative, and I express my profound thanks to them for sharing their views with us on topics of such contemporary relevance. I'd like to thanks to keynote speaker Dr. H.S. Chawla, former professor and Dean, Department of Genetics and Plant Breeding, Pantnagar, University Pantnagar, for his graceful presence in inaugural session. I also express my sincere thanks to the faculty members, administrative staff, technical committee, and photographer who have taken keen interest to attend this program. I am thankful to the participants who are present here for being a wonderful audience. Lastly, my thanks are due to my colleagues and the members of organizing committee and also student volunteers who have worked with great dedication to make this program a success. Thank you to all. Thank you, sir. And on this note, also let us thank and salute our nation. Ladies and gentlemen, please rise up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I invite all the members of organizing committee for group photograph with the guests.
Guests will be now leaving the venue. Kindly stand up in their honor. I invite all the participants and faculties for stage just outside the venue. All the participants are requested to reassemble in the same hall after 20 minutes for the keynote address. Thank you all for your presence. Have a nice day.
रहने देना जा रिंग टोन ही तो बजेगी जो कोई आगा रहने दे फिर कहीं से बजागा इससे तो फायदा क्या होगा फोन आ जाएगा तो क्या हो गया नीचे थोड़ी जा रहे ये सामने बाहर है कैंटीन में थोड़ी जा रहे दरवाजे के बाहर
लंच के लिए जाओगे ना मीठी नरसिंह इधर बैठ जा बेटा इस तरफ आ जाओ यहाँ से सुनाई देगा अच्छी तरह से जब लंच के लिए जाओगे ना दोनों तब याद रखना एक तो ये फोल्डर भी लेके जाने और आ जाओ इस तरफ बैठे थोड़ा देर यहाँ अरे इधर लगाओ इधर टांग दो आई गाड़ी तो मैंने उसको यही बोला हाँ इधर लगा पर लेकिन मैं आपको बहुत तरीका बता मेरे को भी अभी लग रहा था तो वैसे तरीके और इसको ऐसे और ऐसे करके यहाँ पर मुझे पता है देना तुझे देखिए उसको इस मैच में तो हमारी ड्यूटी स्ट्रक्स पहनते हो ना उसमें टन कर यहाँ वैसा पहन के क्या नहीं मैं कह रही हूँ मैंने हाउस 4 5 6 बार रिपीट कर दिया ही इज माय ही इज माय मेरा बेटा इतना बड़ा पर ही इज माय बहुत ही पसंद
पसंद है, जो उसका दिलसर तो उसका फ्रेंड है, अरे नहीं एक और में चेस, डॉक्टर चेस मेरा फेवरेट। डॉक्टर चेस के पीछे तो मैं ऐसी पागल थी कि मेरा वो भी था, जब मैं पढ़ती थी ना फिर भी मेरा वॉल संदेश से आते हैं दीपक जी का फेवरेट होगा या मनोज जी का फेवरेट होगा, इससे चल रहा है। इस वीडियो पे लगाया जैसे जी, इस वीडियो में तो आवाज मेरे सवाल है, बहुत ही अच्छा है कैमरा में चेंज का फेवरेट। तो क्या जवाब है यार मैम मुझे गर्मी लग रही है। हाँ मुझे भी बहुत एसी चला दिया जाए मेरे हिसाब से। हाँ एसी करवा दीजिए, मैं बहुत गर्मी हो रही है अभी और गर्म और बढ़ती जाएगी। मत करिएगा ठीक है तभी भी रखिएगा आप ये बात करते हैं। मैं 1 मिनट में आई हूँ जाने की बात करूँ। हाँ जी बेटा मेरा स्वेटर दे दो जो ऑनलाइन लेक्चर क्या बात है मैडम उठा ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल और ये पोते को नहीं उठाते मैम लाइट को नहीं उठवाना लाइट हटेगा 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 लाइट हटेगा यहाँ पे किसकी ड्यूटी लगी है हॉल में भारती सर से पूछो उन्हीं को पूछो किसकी ड्यूटी लाइट कौन होगा ना इसके पीछे रख दिया मैंने आप लगा ठीक है दीप्ति मैम मैं आज ये यहाँ हेलो क्या मैम ये उन्हीं का ग्लास है ये से रखना बस ये सर का ये उन्हीं का वाटर का ग्लास मैम एक टेबल साइड में रखो सर के लिए वाटर का ग्लास मैंने उनको बोल दिया मैम ये मैं ग्लास ही लिखना हुआ है ठीक है इसे यहाँ से कर देते हैं ये नहीं बस 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 इसके ऊपर वाटर का ग्लास एक उस तरफ कर देते हैं एक इस तरफ नहीं मैम दिखाई से कर लो यार बिना नीचे ना 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 एक इस तरफ कर दो बस ऐसा ही और चिकनी ना ऐसे थोड़े हंसी मस्ती के हो गया
एक गिलास वाटर रख दीजिए चाहे उससे ऐसे और वो शुरू जैसे वो करा हुआ है ऐसे कर दो ऐसे बस अरे कल में एग्जाम मैंने दी थी किसी ने मैंने बोला अरे आपने हमने तो छोड़ दिया है बस यही बोलने की देरी थी मैंने कहा वो भी सारे वो रूल्स है ना मैंने कहा क्या करूँ यहाँ लगा ये अब ये सर आ गए सर Good afternoon, all. Dr. Dipali Rana, Assistant Professor, Department of Zoology, Dolphin PG Institute, and member of the organizing committee, welcome you all to the keynote address. We are delighted to have amongst us Dr. H.S. Chavla, former head, Department of Genetics and Plant Breeding, Pantnagar University, Uttarakhand, as our honorable keynote speaker for today's program. It will be a privilege for me to introduce Dr. H.S. Chavla to you all. Sir, kindly allow me to read your brief citation. I'm reading your brief citation, sir. Dr. Harvinder Singh Chavla, former Dean and Division Head, Genetics and Plant Breeding, former Nodal Officer, Intellectual Property Management Center, IPMC, Pantnagar. He obtained his bachelor degree in biology from Deshbandhu College, Delhi University, and PhD from Punjab Agricultural University, Ludhiana. He is an experienced professional with demonstrated history of working in the higher education sector, having developed expertise over 40 long years in the field of genetics, intellectual property rights, biotechnology, life sciences, biodiversity, and biochemistry. Served as Division Head, Genetics and Plant Breeding, Pantnagar, apart from several other senior management and administrative positions. Dr. Chavla has availed postdoctoral fellowship offers by Germany and Canada and has visited many countries. His few publications are upon Introduction to Intellectual Property Rights, a popular book on biotechnology with Indian, international, Chinese and Persian editions, used as standard course curriculum and reference book across several universities, Introduction to Plant Biotechnology, third edition. With these words, I welcome you, sir, on the stage to kindly deliver your keynote lecture. Kindly give a standing ovation, everyone, with a huge round of applause. Thank you. Kindly be seated.
doing well. Thank you, organizing committee. Fine. Dolphin Institute, Dr. Shalini, Dr. Onyar, other delegates, and other staff members, students. Shalini told me that you have to come on 10th. Am I audible? Yes, sir. हैबिचुअल दूसरे वाले माइक पे है ना, जरा यहाँ पे शुरू करना है, वो कॉलर माइक की आदत हो गई। I tailor my presentation according to the audience. Okay. I'm thankful again to the organizing committee for giving me an opportunity to talk to you physically. After long 2 years, I'm giving my first lecture on a physical mode. Though online, I have given so many lectures in between. You have heard Dr. Unyal, Dr. Farooq. I've learned a lot in the morning session. And what I'll say that what Dr. Farooq has said, if you follow, you will lead a very good life. We always try to follow and imitate others. So I'll start basically on that note, which Dr. Farooq mentioned, art of creation. And he mentioned quite often the innovation, because he was from the Himalaya drug. They have been innovating drugs. They were filing patents. So I'll make a distinction between invention and what is the difference between invention and innovation first. They are the first 3-4 slides. You know Steve Jobs. Innovation distinguishes between a leader and a follower. I'm taking you, I'm just because trying to link his presentation, his oration with my lecture. It's a coincidence. अभी शालिनी ने पूछा यही है, कोई भी स्लाइड लगा तो मैं अपने आप टेलर कर दूंगा उस हिसाब से. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अब थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल भी ले आऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी भी ले आऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू टेल. Slides will remain same. Expression will change. That is my copyright protection. I speak in between. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आई कैन स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश मोर और इन इंग्लिश. Okay, again, am I audible? Move to the next slide. You have seen, heard about Albert Einstein. It says the intuitive mind is a sacred gift and rational mind is a faithful servant. Always try to think whatever, you should try to create new things. As a researcher, students are very happy. MSc PhD का thesis जब लिखते हैं, we agree, our results agree, तो कि आपको सोचना ना पड़े बिल्कुल कुछ भी. Agree कर दिया, statement खत्म हो गई. But the moment if you got something new, you have to think how to explain that thing. So you should have that this sacred gift which you have, intellect mind. Now, what is innovation? Innovation is pointer कौन सा है? अच्छा. Innovation is what is desirable to users,
what is possible with the technology. Possible with the technology means what you have invented. What is desirable, accordingly you do inventions and all those things. But the other important part is what is viable in the marketplace. All the inventions do not go into the market. If there are 100% patents are there, only 5 to 10% go into the commercial phase. That is, they are only viable in the market. That is innovation, combination. Whereas invention is just one part of that one. I'm trying to show 2-3 examples what we say when we talk about intellectual property rights. We call this as intangible mind. As I said, you can put any presentation I have, but as per the organizer's demand, I just change few slides. What is in your mind that is intangible? I'll try to explain for that. Tangible is, for example, bottle is there, this is there, screen is there, computer is there. These are tangible things. Which you could see, which you could feel. These are tangible. But what is in mind, you can't see. The World Intellectual Property Right findings are 2017. It says that I'll not go to the complete reading it, but the value has increased. 3 products, food products, motor vehicles, and textiles account for close to 50% of total income generated by intangible mind. Let's take 2 examples. Everyone has a mobile. And those who have Apple mobile, they will always keep it upside down to show half cut apple is there, isn't it? To show them that I have an apple. जो कमजोर होता जाएगा हमारे जैसे गरीब हैं तो my son always say take a new this thing and they changed it. कहते हैं हमको पसंद नहीं आया आपके पास पुराना पड़ा हुआ कर दो चेंज डेटा चेंज कर लो मेरे को तो दिन में 1 या 2 कॉल आती हैं या तो लेक्चर का आता है या कहीं और तो कोई कॉल आती नहीं बाकी मम्मी जो है बेटे बेटे सब उन्हीं से ही बात करते हैं मैं तो बड़ी क्रिस्प लैंग्वेज में बात करता हूँ दिस इज ए फैक्ट जैसे उन्होंने कहा ना अभी डॉक्टर फारूक ने या अभी और किसी की बात सुन रहा था मैं कि 2-2.5 घंटे बात हुई किसी के कंपनी के मालिक से उसने सिर्फ 3 यस नो हाँ नो बोले बाकी वो चुपचाप सुनते क्योंकि मैं एडमिशन सेल में था 4 महीने मुंह बंद रखता था बिल्कुल ही कि मेरे मुंह से कहीं ये ना किससे पेपर बनवाया किससे क्या किया बीवी भी नाराज सब नाराज 4 महीने ब्लड शुगर भी बढ़ जाती थी तो क्या करूं अब उसके बाद ब्लड शुगर भी ठीक हो गया प्रेशर भी ठीक हो गया ब्लड प्रेशर दवाई भी बंद हो गई सब कुछ बंद हो गया क्योंकि आई एम नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन तो coming back to the intangible mind, it says that Apple and Samsung microphone or Samsung these mobiles with market share of 57%, 25%, और they capture about 42% जो उनकी intangible income है 42%. क्या है intangible? This will talk about. And if you see, this is Apple. Okay, now it is 42%. Why? Samsung and their cost price. So don't think कि intangible बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पेटेंट सब जगह बोलते रहते हैं. Coffee. This is another. I'm just trying to give as in a layman's language. I'm not giving as a technical one. Earlier you used to have a coffee at home. फिर कैफे कॉफी डे आया फिर उसने आया स्टारबक्स आ रहा है लोग रात को लाइन में लगा के खड़े हो पता नहीं 11 रुपए खुल गया कि नहीं खुल गया है नहीं जिस दिन खुलेगा आप भी लाइन लगा के खड़े हो बेटा भी मेरे को बॉम्बे में को कि आई लिव हाफ ऑफ द टाइम आफ्टर रिटायरमेंट इन बॉम्बे कुछ भी पापा वो लेट्स गो टू स्टारबक्स बड़ा गिलास देते हैं 800 रुपए की कॉफी 1 for 1 अरे यार 400 रुपए की भी यार 1 for 1 में भी 400 रुपए की कॉफी
But people are going. और क्या कहेंगे? They will say, I went to Starbucks. आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं. Right? Now you see, I'm just trying. This is a global change. From simple, this is not mine. World Intellectual Property Right findings say कि कैसे कॉफी की वैल्यू इंक्रीज होती गई from $1.45 to $2.89 to 5.14, and now they say where it is grown, how it is grown, that gives the market value. Starbucks में I read a book on habits. उसमें एग्जांपल जो दिया था, he was a very adamant person. अभी रिसेंटली अभी 4 महीने पहले ही पढ़ी है, तो खाली था तो कुछ ना कुछ बुक उठा लेता हूँ, पढ़ने की मेरी आदत है. तो उसमें स्टारबक्स वाले का ही पर्सन हु वाज देयर, उसका एग्जांपल कोट किया हुआ था. ही वाज वेरी एरोगेंट. और स्टारबक्स में दे हैव बीन टीचिंग यू, आपको दूसरा गाली भी निकाल रहा है, उसको भी धन्यवाद हाथ जोड़ के कहना, नो थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमको शब्द दिया बहुत अच्छे ही दिए. उसमें they are teaching you, and I have seen it. मैं गया वहां पे बाई चांस कोई काफी दूसरी और टेस्ट वाली नहीं थी, तो ठीक नहीं है, ओके विल रिप्लेस इट. दैट इज द कस्टमर वैल्यू. So that's the value of this intangible. What I said, from simple grown coffee to where it was grown, in which environment, that gave the value. Another example I am trying to give you, क्योंकि ये लंच का टाइम है, आप सोने शुरू हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके I am trying to make active. I hope you had a tea or coffee. Okay. This was another example how people started earning money. There was a grumpy cat, there was a picture, and they started making memes of that one. I don't care. These are few examples. These are all from internet. IPR का क्योंकि I have to create something, otherwise शालिनी से मैंने तो आपके इतने लेक्चर सुन लिए, अभी भी वही दे रहे हो. अब कुछ ना कुछ मेरे को, मैंने कहा शालिनी को पिछली बार ये सुनाया था, चेंज कर देता हूँ थोड़ी स्लाइड. तो this line who grew a business empire with IP rights. What were the IP rights? It looked grumpy, and people started making rhymes, and some people made a company, and then they were trying to sell the things. You cannot use this image. To make story short, she had this grumpy had her own YouTube channel, this thing, all those things, Instagram, Facebook, and everything. This Granite Beverage LLC, they made a contract with this Grumpy Cat Limited, those who were owners, and they tried to use it in some other way for other purpose for which they never made a contract. So they sued it, and then ultimately they had to pay $700 million in damages. Now you see, just a picture of a cat, how they exploited it. So these are the few things which I said, the intangible things. Moral of the story: any business that believes it has an idea. जैसे डॉक्टर फारूक ने कहा, they started the company with 100 rupees. They grew the empire with 3,000. अब आजकल तो वैसे ही ये आयुर्वेदिक और वो चीजें, मैं भी बड़ी चीजें खाता रहता हूँ, कोई मेरे को बता देता है, I'll meet in the evening, Dr. Farooq, perhaps he will suggest something more. So I'll start eating, my wife will search YouTube और वो अपना ढूंढती रहेगी, वो उसका काम है, मैं नहीं देखता YouTube. I don't have time for YouTube and all those things. हर किसी के अपनी नेचर है, मैं I'll spend time in reading other books, जो मटेरियल वो देंगे वो मैं पढ़ूंगा. So to think about it, try to protect in particular form, which we'll see. And okay, just one or two more slides. This is the environment which is a knowledge-based economy. It has a very short cycle, tough competition. Mobile is the best example. एक दो साल बाद this become old, nobody try to use it. मैं बताता हूँ, मेरा मोबाइल मैं तो देखता नहीं, मैं एक साल बाद अगले बार जाऊंगा, बेटा दे देगा. This mobile is old. तुम्हारे पास पैसे फेंकने के लिए फेंकते हो, मेरे पास नहीं.
Okay, technology changes. Perhaps 5G comes and then he says you have to give lectures. Okay, now you should mobile should be 5G. This and all those things. Okay, you change it because they are in that business and all those things. The point is, so the companies, those who are making it, they have to harvest money immediately because after 1 or 2 years that will be gone. So that's why whatever the cost is, those who have seen the sharks, you have seen the value of the product is 50 rupees and they were selling it for 600 rupees. That was very interesting. So now you know a little bit. The genesis is, I'll not read the whole thing, just in 2-3 statements. We had the GATT agreement in 1947-48. On 1st January 1948, this was implemented. GATT agreement, General Agreement on Tariffs and Trade. Tariffs and trade. When you are trading, how much tariff is to how much duty is to pay for. Somehow it became that in different rounds of negotiation, they wanted to bring agriculture as a tradable commodity in 1986 in the Uruguay round, which started in 1986. And as you know that India is also development is basically agriculture dominated, agriculture oriented. We didn't agree to that one. So that's why negotiations kept on going. Ultimately, it was concluded in 1994 and WTO came into existence in 1st January 1995. And now this GATT has led to the new organization WTO. Agriculture is also a part of this WTO committee. There are 2-3 things which are very important. India is also a member of WTO, which was established in 1st January 1995. 164 members, 99% of the world trade is amongst those WTO members, headquarters in Geneva, Switzerland, and for decision making, our commerce minister, nominally the participate. And there are different councils, trade policy review body, dispute settlement council for trade and goods and other. There are more than about 59 different agreements are there. So if you are a member, you have to sign in totality to each and every one. There is not, I agree to this and I do not agree to this one. You are a member, so you follow that rules, you are a member of that. Agriculture is a part of that one. Council for TRIPS is there. You know UNO, there is a veto power. But in this TRIPS, there is nothing like a veto power. Each and every country has an equal right. If one country says, I do not agree, agreement cannot be signed. That's the most important. And if there is any dispute, there is a dispute settlement body. So whatever, during arbitration, whatever will be there, so that should be applicable to both the parties. So now coming back to the intellectual property right, as I said, intangible, this is product of your mind and belongs to you just like your house, mobile, car, as I said, physical, these are tangible things. There are TRIPS recognizes 7 different forms. 3 forms are referred initially as industrial property. In the Paris Agreement, will not go into too much history. If I start speaking, I need 2 days to speak that one. Patents, designs, and trademarks, these are referred as industrial property. Copyright is another thing. For example, I'm giving you a lecture. This is copyright. Trade secrets, layout designs, geographical indications, geographical, these are the 7 different. The fallout of is that one, protection of plant varieties and farmers' rights act and biological diversity. We got is member and all those things, you know. Let's talk a little bit of that one as an overview. As I said, you have an idea. जैसे जो पीछे बैठे हैं, they are laughing, they are enjoying, they are talking something else. तो कभी भी हंसना शुरू कर दिए। तो भी 6-7 रो में मैं तो एंड में भी पहचान लेता हूँ कहाँ क्या कर रहे हैं। You are thinking. Somebody might be creating mime of mind. Somebody who is an artist, he will be making a drawing of that. If you make a good drawing, that's good. Your idea is there, you are expressing in a drawing.
मैंने डॉक्टर फारूक को आपने जो कुछ दिया मैंने बड़ा कुछ सीखा, 70% 80% फॉलो करता हूँ, लेकिन 20% मेरे को और मिला। डॉक्टर निहाल ने बोला, मैंने कुछ और देखा। आज के दिन में मैं जो IPR में हूँ, let me tell you frankly, I never read any book on intellectual property rights, and I am the author of a book now on intellectual property rights. I read original articles of acts only, and from lectures only I learned. If I am sitting, you should be a good and great listener. You will not understand 100% of that one. Even if you understand 5% of that one, that is good enough. तो मैंने पता नहीं 200-300 लेक्चर दिए हैं, तो सब में औरों के भी लेक्चर सुने, तो 5-5 2% करते करते मेरे दिमाग में तो सब चीजें आ गई। And then I start keep reading on newspaper, कहीं पे जहाँ देखा, again I cross checked it and this thing. That's why my books are successful. I don't take it as such and put it as such. You have to cross check, and whosoever is the owner, I've given credit to that one. I'll be speaking in IPR terms in my further lecture. So that is expression. I have to mention your books, all those things, copyright. Idea, innovation, invention. You develop a new product or a new process. Anyone, that is it. Earlier was only expression. You didn't create any new product or process. Book is there, you expressed in the form of a book. Design. अभी आज आपको पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए, you will go to Tanish और वहां पे कहोगे, you don't have to say anything. I went to Tanish, बाकी दूसरे सब समझ गए. क्या है? Exclusive design. It's only outward appearance. You are not talking about that this is gold. Outward appearance. Trademark. Coca-Cola, I'll be talking further. This is the only well-known guarded trade secret in the world. Nobody knows. You can imitate it. Coca-Cola bani. Imitation. नाम नहीं रखा Coca-Cola. क्योंकि Coca-Cola का जो ओनर था वो मेरे घर में, we sold our house to उसके contractor को बेचा था. When Coca-Cola was banned during the era of George Fernandez, okay, they were against, I don't know, you know George Fernandez now, yes, right. हाँ, तो वो he was against MNC, so he stopped that no MC, no Coca-Cola. And at that time, Coca-Cola came. वही काला पानी है. You don't know. वही केक वही आता है, वो रामदेव जी कहते हैं एसिड है, ये है, टाइगर क्लीनर है, जो भी चीज है. या थम्स अप ले लो. But you cannot put the name Coca-Cola. अभी उसकी वैल्यू बताऊंगा आगे नेक्स्ट आगे करके. It's only the name. Its worth, name of Coca-Cola is more than 73 billion US dollars. You cannot use the word Coca. पानी की वैल्यू कितनी है? 1 रुपए. You are paying 20 rupees from the bottle. This is all intangible. Trade secret, I have already given you example. IP, all these are bundle of rights. Each property is governed by different laws, they are different tax, each property has different norms of ownership, some are individual, some are collective, for example, geographical indication. Each property has different longevity term, for example, patent life is 20 years, trade secret is 10 years, renewable design is 10 years renewable. So depending upon each has its own longevity. Each property is different in scope, territorial nature. If you have got a patent, your right exists only within the territorial limits of India. Each property has different cost of protection. For the copyright book, it's very cheap. 600 रुपए दे दो और आपके नाम पे हो गया. फिल्म का है सिनेमेटोग्राफ 1200 या 2000 रुपए है, it's on your right. Okay, we'll talk further if time permitted. आप आगे कर दो तब तक करो.
Okay, all IPRs apply to new and original knowledge and not to what is already known. For example, traditional knowledge, it's not protected. Except GI. Geographical indications only whatever is there as per in the geographical area. For example, Almora ki baal mithai, those who are from Almora region. Allahabad ka, Agra ka petha. So these are geographical region specific. Next. Coming to the main patent. Patent is basically an official written document giving the holder sole right to sell something they have invented for a stated number of years, as I said, 20 years. It's a monopoly. You are restricting others not to use unless until you pay for that one. State approved right to exclude, negative right because you are excluding others not to use. Limited duration, as I said, 20 years. Territorial right, your patent right exists only in that country. There are certain fees and other regulations. And there are only simple 3 criteria. Looks very simple. It should be new, novelty. Novelty at the global level. अरे देहरादून के बाजार में के नहीं दिखाई दे थोड़ा ना हो गया कि न्यू है. If you have not seen that, that doesn't mean it's a new. So you have to check the novelty at the global level, at the world level. Utility. Some say this is useful, but some patent office are not only useful, it should be industrially useful. So accordingly, when you have to file patent, you have to look for that, okay, for which country you are filing patent, what are their requirements, and non-obviousness, inventiveness, what you have invented. It's not altogether a new. For example, fan you say, a needle. The latest patent on the needle was granted in 2012. It's not a, for example, first patent was in India was granted to पंखा pulling machine. पुराने जमाने पिक्चर देखी होगी ना, आला मारा और ये वो पुल्ली से खींचते हैं. अब तो कहीं ये क्या? Fortunately, your institute is new और छोटे-छोटे नए-नए फैन दिखाई दे रहे हैं. पुरानी यूनिवर्सिटी में जाओ तो बड़े-बड़े सीलिंग फैन भी हैं. बड़ी एनर्जी लगती है घुमाने में भी उसमें. So it's not that fan altogether. If you develop, then only you'll. Whatever you have invented on the previous invention, if it is a significant 10-20%, then the patent right will be granted to that 10-20% of that invention. That means which was not obvious to the person who is skilled in that art. So that is something. So these are the 3 things patent office look for that one. There is Article 27.1. It says patent shall be made available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology. Because sometime back there was a 20-30 years back there was a confusion. Perhaps biotechnology inventions cannot be protected by patent system. Markets crashed in USA. In all the fields of technology, provided they are new, inventive step and industrial application. What is a patentable subject matter? Under Indian Patents Act 1970, which is applicable right now, invention which is defined as a new product or process, which I mentioned time and again, new product or process, and it says involving an inventive step. That's what I'm saying, which was not obvious to the person who is skilled in what you have done, that is invention, and capable of industrial application. Then patent officer further clarify means a feature and mention that your technical advance as compared to the existing. Okay, student कहता है, अरे सर इसका तो patent है, why should we do work on that? It's not that one. You should keep on working on that. You should develop further refinement in that, and it should have a economic significance or both. That is known as inventiveness. Again, this is the same thing. Usefulness I have already talked about. Then there is another article which is very important. I'm just mentioning, I'm not trying to load with so many things, which are very important and sometimes, as Dr. Rohit has mentioned,
general knowledge questions are being asked. And I am trying to give example of that one. 27.3 AB, diagnostic, therapeutic and surgical method for the treatment of humans or animals you can exclude in our Indian patent system. And then Article 27.3B is again very important. Technical language I'll not go, but it says that those who are members of WTO, they have to protect microorganisms by patent system. New, not the original. They are discoveries. You know the different discovery which is already existent, you have found out the ways to found these. Microorganisms, new microorganisms should be protected by patent system. Plant varieties should be protected either by patent system or you should make your own law, but these are to be protected. Animals, they are silent. So when we had Indian Patents Act 1997, first amendment came in 1999 and second amendment came in 2002, where we agreed to protect our microorganisms. And the third amendment was in 2005, where we considered that all the products, medicine, pharmaceuticals, and all those things, they are protectable by patent system, the products also. And for protecting plants, we have made our own sui generis system, Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act, where we are registering plant varieties, a softer version of patent system. Because it was mandatory under the TRIPS regulation that we have to protect plant varieties. So Indian Patent Act is now totally TRIPS compliant. We are giving product patent in agrochemical medicines, all those things. Like for patent is 20 years. Compulsory licensing is another class. If, for example, a patent is granted and you are not able to get product or that, I'll give one or two examples. That is a very important class. So compulsory license can be issued to a particular thing. Rules on filing fees, on number of pages they have increased. If the number of pages increases, you have to pay more. Number of claims are more, you have to pay more, and all those things. There is pre-grant and post-grant opposition. Before grant, and even if has been granted, then also you can oppose it, and patent can be revoked also. Fast track grant का ये नहीं है कि आपको रिश्वत देनी है, you don't have to pay bribe. Normally when patent is filed in the office, they keep it for 18 months, it remains silent. They give time to the inventor to think whether to proceed further for examination or not. But if you think that your patent is capable for commercialization, you can pay the fees for examination, it can be immediately taken up. So that is referred as a fast track grant of patent. That 18-month period is waived off because you think that, okay, it's commercial. For patent filing outside India, for example, people feel pride that I have a US patent, but your right exists only in US. For example, in case of some of the plants, we do not grant patents on plants in India. For example, CMAP, Central Institute of Medicine and Aromatic Plants, they know that certain medicinal plants, they have a value there. If new variety and new thing develops, they get a patent in there because USA grant patent on plants. So nobody can use that one. So you have to take permission or first filing a patent in India. There are few non-patentable inventions, frivolous, injurious to public health, substances obtained by mere admixture or mere arrangement. This is only one word, mere. जैसे भुजिया खाते हो, I'll give example. मूंगफली खाई तो मूंगफली का टेस्ट, चिप्स खाए तो चिप्स का टेस्ट. No one has link with the other component. That is known as mere admixture. You are doing research, for example, for controlling a particular disease. You put 3 chemicals, they will control 3 diseases. You didn't invent anything. You simply made an admixture. Other part is, this is the same thing, but you read the second part.
salts, esters, isomers, polymers, metabolites, and other derivatives are not shall be considered to be the same. You know the compound dextroligo, isn't it? They have little bit difference in their function or property. You know, isomers, I don't not going to. What the companies do, especially pharmaceutical companies, once their drug is going, the patent is going to expire because the life of patent is 20 years. In the 50th or 60th year, normally 3 to 4 years normally it takes when the patent is granted. They change the compound little bit, modify it, and they file as a new patent. Patent office refuses. And one of that case is Gleevec drug. This case was fought at the minister level at before case went to the Supreme Court of India. Novartis anti-cancerous drug. This I am giving in a short. Those who want to read, they can read it in detail in my book. Challenged the Indian Patent Act 97 as non-compliance to this. This is comes under Section 3D. इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है. Section 3D in the Indian Patents Act. Mere discovery of any new property or mere new, this is the technical language of that section. The case started in 2006-7. It went to first patent office, they rejected, and appellate board rejected, high court, they rejected, ultimately it went to the Supreme Court, and in April 2013, 2nd April, it was not first, Supreme Court rejected Novartis PR. They challenged Indian Constitution that Section 3D is not as per TRIPS regulation. Supreme Court said no, it is as per the TRIPS regulation, and then they rejected the case. At that time, this is a Switzerland company. Switzerland Commerce Minister also came to India. They requested, and Commerce Minister refused that I cannot interfere. Because in the dispute settlement body, individuals cannot go, the countries have to represent there. So Novartis then they didn't have any case for that one. So they lost the case, and now this drug is now, there is no, this is also known as grading of patent and all those things, technical language. Compulsory license. Because what the big companies do, they make the drug price very high because they have invested so much of that money. After 15, 20 years of research, they invented a compound and they harvest the money. This is one such case of renal cancer drug, Nexavar. The price was 2,80,000 for 1 month treatment. Then Indian Patent Office granted first compulsory license to this NATCO firm, Hyderabad, and then now you see the drug price at 8,800 for 1 month treatment. See, 2,80,000, 8,800, and out of that also they had to give royalty to the company 6%. They have to give something free also 25% of that one, and companies also earning on that one. You know the value. मैं डायबिटिक हूँ, मैं भी एक दवाई खाता हूँ लंच टाइम में. अभी जेब में नहीं पड़ी होती है. जब ये लंच ऑफर करेंगे तो मैं दवाई ले खाऊंगा. It was costing 10 tablets at 680 rupees. अब उसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला था, तो डॉक्टर रेड्डीज लैब और 2 कंपनियों ने लॉन्च कर दिया. न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स में उसी टाइम ऑर्डर किया फार्मा इजी पे, अगले दिन मेरे को मिलनी शुरू हुई. अब वो 180 रुपए की 10 टेबलेट है, 20% डिस्काउंट 140. मेरे लिए तो सबसे सस्ती ड्रग वही हो, which was the most expensive drug because the patent is going to expire. So this is, that's why you are going for. And what I am trying to say, I don't have so much of time that one, but whatever is there, we have been following in our Indian Patent Act. Then method of agriculture, horticulture is non-patentable. Medical, surgical, curative, prophylaxis, treatment of human beings, this is a non-patentable. To make plants free from diseases or to increase the economic value of that product is a patentable. To make plants, this is the process, not the ultimate product. I said, in India, plants are not protected by patents. They have to be registered under PPV and FR. Invention which in effect is traditional knowledge. Dr. Farooq है तो उन्होंने कई पेटेंट दिया है.
Everybody knew this thing. नीम का सबको पता है. It's used. मैंने तो कच्चे पत्ते भी खाए हैं to control my sugar. But there are so many patents on that one. It's not the neem. They have isolated the product and they have protected that product in the form of patent. They showed that this product from the neem has this compound and this is the function of that one that is protected. But as such you go, neem, it is not protected. Haldi, as such, turmeric, so many cases. Okay. In India, living plants or animals or human beings are non-patentable, modified. In some countries, they are protectable. This I have already talked about. Who can be the applicant? Inventor, assignee, natural person, or legal entity. You give right to the liar, authority. Legal representative, company, university, because in the university I was in charge. So on behalf of all the inventors, I used to file it. So my duty was limited only up to that level. They have to give in writing that only you are the legal person to file that one. I am not the inventor. Where you can file, as per in the zone, north, south, east, west, their office. We fall in the northern India. Delhi is the patent office. And if rest of India, for example, new state is created today, and still it is not there, then the head office, Calcutta, you can find that one. There are different type of patent applications. There are 6 type of patent, but normally the patent which you file is an ordinary patent application, convention, divisional, additional, PCT international, PCT national application. Normal application is, I've used the PCT here. It says that, okay, come in 1 or 2 minutes. When you submit the patent application, there are documents, just like you write a thesis, those one masters or PhD. You have to go review of literature that this was already known, and now you have invented that notion, just like a thesis. You do the review of literature, this is known, now I have done. मैं हिंदी में बताता हूँ, हम सब लोगों में मैं करने की आदत करते हैं ना बकरी की तरह. मैंने किया, I have developed. इंग्लिश में बोलना, हिंदी में थोड़ा जैसे कहा ना डॉक्टर साहब ने, in whatever language you feel comfortable to speak. The government of India recognizes that man to reward you. आपने किया है, मैं किया तो लो, हम तुमको रिवार्ड देते हैं. पेटेंट for 20 years you exploit that one. आपने कॉपीराइट किया 60 years बुक पे. ट्रेड सीक्रेट है, लाइफ लॉन्ग, कोई लाभ नहीं है. अब जैसे माँ कोई झूठ बोलता है, पेरेंट के जाना तो बच्चों कहते हैं ना चॉकलेट खा ले, यू ब्राइब इट. तो गवर्नमेंट भी हमको ब्राइब देती है, आप इतना पैसा ले लो, इतना करो, कमाई करते जाओ अपना में. So this is the fees and all those things, abstract you have to write. The only thing which is important in that one is, in a patent application, okay, as I said, after 18 months you have to deposit a fees that my application should be taken for examination. If you don't submit, it will not be taken for examination. This is a new rule. And when you publish it, so everything will be there. Early publication, this is the fees and all those things. There are 2 types of specification. Provisional, you are doing research, still it is incomplete. So government gives you 1 year time, you can finish your research work. You can write the whole application except claims, because you are still doing research. So claims is the only part which is a part of the complete specification. So if it is a provisional, within 1 year, you can submit again provisional. Your date of invention will be the original on which date you have filed the provisional. So you have got the advantage of 1 year. This is this thing. So when you write, these are the different things, claims and all those things. बीच में मैं रुक गया था. Claims is the only thing for which you are given the right. मैं यहाँ पे जो मर्जी बोलता हूँ, मैंने ये डेवलप किया, मैंने वो किया, वो पेटेंट ऑफिस कुछ नहीं मानता है. In a patent application, whatever you write, 8-10 statements, that for that invention I am claiming that one, your right exists only for those claims.
That's why you hire an attorney. सस्ते वाला अटॉर्नी हम जैसे तो फ्री हैं, एज ए इंचार्ज देते रहे, एडवाइस करते रहे, ऐसे मॉडिफाई करो, बिकॉज यू नो द रिसर्च एंड आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। फिर अटॉर्नी के बाद दे फर्दर 4-5 वर्ड चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अटॉर्नी। जैसे राम जेठमलानी जब खड़ा होता सुप्रीम कोर्ट में, एक उसकी 10 मिनट की फीस 5 लाख रुपए है। छोटे वाला पहले चमचों को भेजते हैं, उनकी 10-20 हजार होती है, जो बड़ा जाता जाएगा। इसी तरीके अटॉर्नी का भी रेट है। तो क्लेम्स आपको सोचना है, यू डिड द इन्वेंशन, यू हैव टू टेल द अटॉर्नी, यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड दैट इज द ओनली थिंग व्हिच विल बी प्रोटेक्टेड। बाकी तो सब कहानी है। जैसे थीसिस में लिख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट और समरी में आप सब कुछ लिखते हो, ये मैं करता हूं। I said PCT, international PCT. If you are done invention and you want to file a patent in USA, doesn't mean you have to go to USA for filing. So India is a member of Patent Cooperation Treaty, signed it. Our Indian patent offices are receiving offices for that application. So you can designate the country for which you want to have the patent in that country. USA का, जापान का, रशिया जो भी है। So you're right. Then you have to file complete details. You get 30-31 months to file that application. Again, sitting in India, you don't have to visit any other country. This is the thing. So as I said, there are so many data sets. It's not that you typed in a Google, you didn't find anything, maybe the invention you हो गए. It's not like a Google नहीं आपको देता है. There are patent search, there are different databases. IPindia, you can go to this IPindia.nic in, you can go to that one. That controls patents, designs, trademark, geographical indications, all comes under that. This umbrella, under this thing. You can go USPTO or European patent databases are the good where you get 99% of the data as correct if any patent has been filed in the world or not. So you can go to that one, USPTO site, this uspto.gov, and then under that heading you can go for search for patents. And then you can go this thing USPTO patent application, patent full text and image database. So if you do it full text and image database, you have to put terms as you do in the Google search and all those things. And then 1 or 2 terms, you will get all the patent application. You have to refine it. If you get thousands, that means your search is not good. And if you don't get, that means you are not very clear what you are searching for that. In short, you can go to European database also, eSpaceNet, the same procedure is being followed. This I have just indicated those who are doing research, you can do that one. Earlier there were 8 categories. If you see some of the journals now, they say agriculture comes under human necessities A, B, C, D, E, F. Now they have added another 9th category Y also. This is something about patents. For other IPRs, I'll talk a little bit. Copyright, as I said, lecture, books and all those things, musical work, artistic work, literary work, lectures, periodicals, your question papers, all these comes under copyright protection. Computer software, it is not being protected by patent. It is protected by copyright. Engineering designs, no renewal required. Term of the copyright is 60 years. Earlier it was 50 years. Again, there is a history. Copyright and the data we have this Indian Copyright Act 1957. If you see, there are different aspects in that one. Amended in publicly perform, communicative, visual, translation, adaptation, renter, resale, moral right. 2-3 things which are very important I just mentioned. When you write a book, some of you are writers, you go to a publisher and then you say how much royalty you will give. This is the normal thing. 6%, 8%, 10%, 12%, depending upon how much you get. And then you forget. But it is not the only
financial and commercial thing. There are other things like translation and adaptation also. As I mentioned in my introduction, वो भी हम ही देते हैं, बोल देते हैं, we are thankful. It's a mandate कि अपना थोड़ा सा बायोडेटा देना पड़ता है, बाकी तो हम अपने आप बता देते हैं मैं क्या हूँ. For example, your book is translated. As I said, my book is translated into Chinese language. Whether I got the rights or not. Normally, you people don't look at that angle. अभी पीछे और भी लड़ाई और मैं बीच में बताऊंगा. So you have to live. And the last is the moral right. Even you have given rights to the publisher. उसमें लिखा था ना C and circle, copyright protected. Even you have given all the rights to publisher, moral right always exists with the author. उसमें कहते हैं कि नो, ये तो ऑथर का लिखा हुआ था, गलत लिखा तो ऑथर का, जैसे चेतन आनंद और ये खाती रहती कहानियां सुनते रहते हैं. There are very little amount of fees, 200, 600, 1200, ये कुछ ज्यादा फीस नहीं. Copyright is 60 years from this, and international protection is at international level. Those who are member of the Berne Convention, they are regulated by that one. You cannot use that and that. For every IPR right, there is a regulation in that one. For design, there is a Hague Agreement, this thing and all those things. This is the book which was translated and adopted. मैंने कहा ना मैं अपनी पढ़ाई खुद कर लेता हूँ, हालांकि अब तो बहुत पुरानी हो गई, साल की पढ़ाई रही होगी, बायोटेक्नोलॉजी मेरे को बताने की जरूरत नहीं होती. कि when one of the publisher made an agreement that okay, it's the same book in English, only cover is in Chinese. Other publisher has taken that they will translate into Chinese language. एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, I had to give lecture, तो चाइनीज लोग थे और ताइवान के लोग थे, तो मैंने कहा व्हाट इज द नेम देयर, मेंशन देयर, ये लिखा हुआ है, जैसा लिखा था, कहते चावल चावल लिखा हुआ है कुछ. मैंने कहा ठीक है मैं ही हूँ फिर वो, क्योंकि वो यू नो चाइनीज लैंग्वेज दे हैव अ कैलीग्राफी, दे डोंट हैव अल्फाबेट. तो मैंने कहा मैं ही हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, फिर चावला ही है तो चावल बना दिया उन्होंने. तो the purpose is to simply give you, it's not an hypothetical I am talking about, it's giving my own example. Then nothing is free in this world. This you have to remember. मैंने एग्जांपल अभी दिया था, माँ बाप के बच्चे को ड्राइव देना होता है, अच्छा शाम को आएंगे तो कोई चॉकलेट दे देंगे, ये तो तुम चुप करो, ये चीज करो, फिल्म देखने जाने, होता है ना. इंटरनेट पे नथिंग इज फ्री. अगर फ्री मिल रहा है तो उसके साथ वायरस के पैकेज आपको साथ मिल रहे हैं. They have a tie-up with that one. For example, few of the diagrams which I took, normally you said Dr. Farooq has mentioned so many times, the couplets which he has recited. This is not mine. I have taken and I'll give you the name. कितनी देर और बहुत मैडम? 10-15 मिनट? ज़्यादा? Okay, I'll finish. थोड़ा सा हाथ उठाऊंगा. अभी तो मैंने रखा नहीं, लेकिन 2-3 बार थैंक्स बीच में रहते हैं, जहां का मैं वहीं पे बंद कर देता हूं. The point here is, when you write the thesis, you take certain statement and then you give the reference. This is not my statement, this is the statement of others. But when I write a book and I take statement from another book, my book is a commercial entity. I am earning money out of it. So I have to take permission for that. So I took, for example, I think 7 or 8 diagrams from this author, John Willey and Sons publisher. You cannot imagine how much money they ask for it. You cannot think of. And my book was to be launched after 2 days in the Berlin World Book Festival. I didn't have any alternative. I transferred the money. Within 5 minutes, I got the permission you can use. क्योंकि book तो सब print हो चुकी थी, आया नहीं था अभी तक.
Some publishers gave free, okay, you can use that. Okay, this is a given example. दूसरा example मैं जो भूल गया, as mentioned, my book has been translated in Persian language also. And I mentioned Bern Convention also. ईरान से एक बार ईमेल आया मेरे पास, Sir, I have read your book in Persian language. Can you send me an English version also? मैंने इमीडिएटली अपने पब्लिशर को फोन किया, ये तुमने मेरे साथ चोर पर जारी किया, मेरे को तो कोई पैसा दिया ही नहीं। आई यूज द स्टेटमेंट में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, शामिल ना हो। मेरी एक हैबिट है कि मैं मुंह पे बात करके फिर बोल सकता हूँ और अकेले में बात करता हूँ ताकि nobody should other listen और वो offend ना फील। But I convey it and I also prefer, मेरी बुक इम्प्रूव भी इसी वजह से हुई कि I want critics। अब मेरे को क्रिटिसाइज करोगे ये गलत है, then only I can improve it। अगर कोई बहुत अच्छा मैं तो भूलता रहूंगा कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं। That's why I could write third edition also with improvement and all those things. You should learn to have critics also. तो पब्लिशर कहता है कि they are not member of the Bern Convention so they can do it। चोरी कर सकते हैं, तो मेरे को उसका कुछ नहीं मिला। So that's why I wanted to point out you should remember these certain basic things. Internet, I have said you have to take lessons and all those things. These are few examples to make you ज़्यादा सो नहीं। आपने देखा होगा इस बैगी पैंट्स वाला बात है, चार्ली चैपलिन मेरा रैकेट पेन, ये they started using without permission, so they sued it and then ultimately they have to take a license। ये भी आपने कभी सुना है कि नहीं, देखा कि नहीं, कौन जानता है? शायद पहले देखा होगा, नहीं उस टाइम तो नहीं थी स्लाइड ये, हाँ बाद में देखा, क्योंकि मैं डेट वेट सब कुछ लिखते रखता हूँ। This is a photograph of a Naruto's monkey. It was selfie. The cameraman had put wildlife photographer, a monkey ने clicked the photo, and that became a very popular photo. And that started fetching money. और लड़ाई शुरू हो गई। मैं शॉर्ट में बोलना तो कि 15 मिनट का टाइम, पेटा वाले आगे, दूसरे आगे, सब आगे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को चाहिए, सब होने लगे। अल्टीमेटली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, दिस कॉपीराइट एंड ऑल दोस थिंग्स, स्लेटर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो था, he agreed to pay some amount of money to PETA and this thing. But the important thing was, US Supreme Court ultimately decision was that copyright cannot be granted to the non-humans. So they lost the case, but Slater was wise enough that okay, I'll give some amount of money to this one, but copyright was not given to Maruta Monkey and all those things. Okay, this is the whole story. Case study related to copy Harry Potter versus they keep the same name, Harry Potter, Crazy 4 case and all those things. The Bang Jhandu Bam, मैं हिंदी में बोलना क्योंकि 15 मिनट का टाइम है। पता नहीं शायद आपने देखा होगा झंडू बाम के केस में, वो कहने लगे झंडू बाम इसलिए बिक रही है क्योंकि नाम उसने झंडू बाम दिया था, नॉट ड्यू टू मलाइका अरोड़ा डांस। अब मैं थोड़ा हंसी मजाक में कहता हूँ, अल्टीमेटली एग्रीमेंट ये हुआ, मलाइका अरोड़ा हैड टू डांस फॉर झंडू बाम, तो जो एग्रीमेंट हुआ बाद में। इसी तरीके 3 इडियट्स, चेतन भगत केस, शोले वर्सेस वोडाफोन, रिंग फोन्स, there are so many cases. There are so many cases, but I just put one slide. Trademark, Bata, Tata, Bata, Hero, Hero. These are 4 words, 8 words. They have their commercial name. No invention. You have put the name, click कर दिया. This is a trademark. It identifies visual. Sony TV. If you remove that Sony, it doesn't have any value. Okay, you all know that one. This is a non-descriptive that stands for quality and reliability. Trademark should be distinctive but not deceptive. जैसे अभी एग्जांपल दूंगा मैं, ये ओरिजिनल है कोका कोला की, आपने देखा होगा ना, सभी ने डांस किए, सभी ने एडवर्टाइजमेंट की हिंदुस्तान में, इंडिया में, ऐश्वर्या ने दी, हनीफ ने दी, but this is the original picture of Coca-Cola when this was trademarked. And that was a Coca-Cola registered. Since then, the mark has been revised and modified several times. As I mentioned, कच्चा है हम कर रहे थे,
रामदेव जी कहते हैं एसिड है, टॉयलेट क्लीनर है, जो भी चीज है, whatsoever, it contains these compound and all those things. And this is the only well-guarded secret in the world, as I mentioned here. As I mentioned, I am talking about the value of trade secret, and this thing only value of some of the world's most trademark. ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है, मैं चेंज नहीं करता वैल्यू देखने. The point here is the name has a particular value. Trademark function is what everybody knows that one time doesn't permit to go. So whenever you have anything, you put in the domain, let all others know that this is a protected thing. There are certification marks, wool marks, this thing, tag mark, ISO, IPO. So there are organizations, they give you the right as per the certification. Now you can use that, you are following that standards. There are service marks like LIC, this thing, State Bank of India. Collective marks, INTUC, these are also come under trademarks and all those things. These are some of the trademark infringement. Like me versus like me, I said it should not be deceptive. Colgate versus Colgate. ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, there have been infringements and the case went to the court. These are not hypothetical I am giving. Mercedes Benz, शायद पता नहीं आपने कभी देखा था, Benz undergarments करके आने शुरू हुए थे. Mercedes went to the court, then they were stopped only that one. You cannot because you know अभी डॉक्टर फारूक भी Mercedes Benz में आए थे, जो देखा होगा. तो कुछ दिखाने की जरूरत थोड़ी है. Benz कह दिया वो तो रिच आदमी. अब Benz अंडरवियर में थोड़ा रिच हो जाएगा. Fanta versus Facta, and these things do happen in small villages and other things. Safal versus Sakal, and I have given you the cases also. शालिनी knows, हमने वहाँ पे पचौली का प्लांट लगाया था. वहाँ पे जो पानी का वो जो स्टोरेज टैंक होता है, नामली बड़ा जो कॉमन वाला था, उसमें एक लेटर हटा के उसने दूसरा लेटर किया हुआ था. मैंने कहा बड़ी मुश्किल से एक मिला है कॉन्ट्रैक्टर लगाने के लिए, चलने दो. ये तो मेरे को पता है, मेरे को क्या, मैंने कहा मैं IPR का इंचार्ज हूँ, तो मेरे साथ क्या बोल रहे हैं. तो ये नॉर्मली छोटी जगह पे ये रहता है. Taj Palace Hotel, those who have gone to Bombay, this is the latest trademark which has been architectural building has been trademark. These are the other architectural buildings. This is for general knowledge. ये जनरल नॉलेज क्योंकि KBC में एक क्वेश्चन आया था अभी ये पीछे, ताजमहल होटल ये किस वजह से प्रोटेक्टेड है. मदर टेरेसा, शालिनी ये सब स्लाइडें नहीं की, रिवाइज है. This is the border, blue border, Mother Teresa. This is also again famous body. This is a protected as a trademark. Design outward creations. We had design cycle 1911 amended. Now we have design cycle 2000. It's only the ornamental appearance, outward appearance. Conditions it is for 10 years, and 2 or 3 combinations of design you can put on another article also. Again, that is given as design. Trade secrets, I have said as a Coca-Cola and other things, this is the older. There is no act on that one. It comes under the civil laws being protected. All these things, oldest practice farm, okay, trade secrets, must follow 3 basic criteria. Information must not be generally known. For example, if any file moves, sometimes it is secret, it's put in the envelope. So if it is open, that means this is the fault of other, not for the owner. You have taken all the protective measures that information should not be known to the public. Formula, pattern, compilation, program, techniques, product costing, and all those things, these all come under the trade secrets. When you are going to discuss with that one particular thing that I have developed this and this thing, you can have an agreement, non-disclosure agreement. It's not that you simply discuss and now you say, no, I have developed it and I discussed with you and now you have used that. You first sign an agreement, non-disclosure agreement. If a trade secret is cracked by any improper method, then infringement can be filed. Otherwise, okay, these are few of the cases
where they were found guilty. Don't have time, but their IC layout design is another thing. Integrated circuit, this is again new made in 2000 in India. Those were in electronics, another thing. I'll finish in 5 minutes. GI is other thing. Okay, these are, if you have one particular thing, it is being protected not by one thing, but so many things. So that's what is the indication. This is another thing. Coca-Cola, trademark, design, copyright, trade secret. So you created one product, but this is being protected by so many things. You have to know by which way these are being protected. Last part is your GI and PP correct within 5 minutes finished. This Nagpur orange, Darjeeling tea, and all those things. These are all geographical indications. Head office is in Chennai. It comes under the same trademark office. When you submit application, the in GI, 3 types of goods are protected: geographical goods are agricultural, natural, or manufactured. So, who can apply? This is the only thing which is not given to any individual. Because, for example, Agra ka petha, no individual person can own that one. So, organization of producers of that thing, they will be given the right. So, when you file an application, part A particular related to registered GI, part B particulars of registered authorized users, those who are doing that. These are some of the agriculture goods, manufactured and processed goods. Benefits, I think you know that आगरा का पेठा and this thing पेठा तो सब जगह मिलता है, लेकिन आगरा का पेठा आप करते हो 10-20 रुपए महंगा मिलता है. Strengths are there, punishments are there. Again, you can go to the website and you can go for a quick registered GI. It will give all the information. What are the GI registered? These are the few things. Darjeeling tea was the first GI which was registered in India. Last part is within 2-3 minutes. I'll finish that one. PPVR and FRR. When we do, there are 3 different parts, pillars: researchers' rights, breeders' rights, and farmers' rights. This is the sui generis we created it for protection of plant varieties. Not only the new, because patent protects only novel. We do protect new varieties. Extant means old varieties. Farmers' variety, again traditional varieties, and transgenic varieties. You know that what those things. All these are being protected because we bring biodiversity, which we don't want that our biodiversity should be taken by somebody else. So that's why we created our own sui generis system of protection. Essentially derived variety needs some extent. That means there is one basic variety and you add one more feature. So variety is same, that is initial variety, and essentially derived varieties, there in that new variety you have added one more feature. That is known as essentially derived variety. So criteria for registration is if it is a new novelty feature, otherwise there are 3 features: distinctiveness, uniformity, and stability. Distinct means it is different from others. Uniform, as per the criteria, self-pollinated, cross-pollinated, they have defined criteria, how much standard is there. Stability means that this character is being governed genetically, that this character will be transmitted from generation to generation. So application for registration, any person, successor, assignee, and for farmers variety, a farmer, group of farmers, community of farmers, universities. For example, in behalf of the university, I was a nodal office, I was doing it. So these are the things. There are different forms, 1 and 2. Again, there is a full technical questionnaire, as in the patent you write prior art and all those things. You have to give all the details, pedigree, breeding method, and all those things. This is the procedure which they follow it. Normally, when you submit the application, they will give you at that time number and all those things. It will be examined. If there is any fault, they will report to you. Once it has gone, then it will go for the dust testing. Then they will ask you to deposit the fees, dust testing fees. It is being tested for 2 years.
for new varieties, for common farmers variety for one season, 1 year. So this is the procedure. Once variety is registered, then the breeder has an exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety. He can authorize any person to produce, sell, market or deal otherwise as in the patent rights. So you have all the rights available. Researcher's right, if a variety is registered, you can use that variety for research purposes. But if it is going to be used as a recurrent parent again and again, as in case of hybrids, then you have to take permission. That means permission means you have to give some rights or benefits to that one. This is there. Validity is for 9 years for trees and vines and 6 years for animals. It is renewable for 15 and 18 years, that is the life. Farmer's right is the last. The 3 rights are there. If a farmer is there, he has the right to seeds, right to register variety, right to reward and accommodation, right to information, right to benefit sharing, right to compensation. I need 1 hour to explain that particular slide. So that's why you can say India is the only country in the world, short statement, where we have given so many rights to the farmer. No, these rights are not available to any farmer in any other country of the world. This is in short. We were doing it, as I said, मैं करता हूँ. So as I was heading, so we started working for farmers. So in short, we were the first one to register first 3 farmers varieties in India. I am not the owner. Owners are farmers, group of farmers or community of farmers. Only thing we filed, and these were the first 3 varieties which were registered in India on behalf of the farmers in Rasan, Tilakran and Hansana. After that we filed so many things. I didn't put it. In short, whatever I have said, I was asked by ICR to write a book. I devised a course. I don't know whether your institution course is there, not UG classes, and ICR university course is there. So as per their needs, I have written a book on IPR, introduction. These are the different contents and all those things. So last slide is the only unique contribution that will ever make in this work will be born out of your creativity. Thank you very much. Anytime if you have any problem, you can make a phone call. अब मैंने विजिट कार्ड भी रखने बंद कर दिए हैं, रिटायर्ड हो गया हूँ. वो कहीं ना कहीं से फोन और वेबसाइट से ढूंढ ही लेते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. आई होप मैंने जो 15 मिनट कहा तो उसके अंदर ही कर दिया है. जब तक कुछ कह रहे हैं, if anyone has a question, you can ask. It's up to the organizers to permit. Okay. A machine. It's very nice to hear after such a long time. I have a question, sir. जैसा आपने कहा मैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? patenting, as Punyal sir also said, is now it is like I mean a tag. You have so many patents. So I being a very young researcher, I come across आप research में भी थे, बाद में patenting में. I've seen that. I'm talking especially of biological sciences. People work on a thing for a limited period of time. They get a small patent in their CV, and sometimes they leave that research in between, and they start working on some other thing. So, sir, आप researcher भी हैं, IPR में भी हैं. Am I right or wrong? And क्वेश्चन पूरा तो नहीं समझते आपका क्वेश्चन का, लेकिन वो स्मॉल वर्ड नहीं होता पेटेंट. पेटेंट मींस पेटेंट, दैट इज वन थिंग. जो दूसरा आपने कहा कि जो आपने कहा कि रिसर्च किया फिर छोड़ दिया फिर वो कर दिया. उनियाल साहब ने भी मेंशन किया था, टाइफेक हैज स्टार्टेड ए स्कीम वुमेन साइंटिस्ट की. उसमें होता है, उन्होंने वर्ड भी यूज किया था कि उनको ट्रेनिंग एक साल की दी जाती है, बट इट इज ओनली फॉर वुमेन. वुमेन का इसलिए कहा कि आदमी को नौकरी करना उनको करना ही करना है. दे डोंट हैव टू प्रोड्यूस चाइल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. बेसिकली वही एक पर्पस था कि दे आर अवे फ्रॉम साइंस. चाइल्ड बर्थ होता है उनको एजुकेशन का, तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वो एक स्कीम शुरू की फॉर वुमेन साइंटिस्ट. यू कैन ओपन द साइट taifec.org.in पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं. इस साल का तो एग्जाम हो गया.
Woven scientists को, if they want to come into the stream, they give training for 1 year after conducting exam and all those things and interview. They select 30 to 40% girls, ताकि वो फिर दोबारा आए, साइंस में जाएं इन IPR और दोबारा आने का। बाकी आपका पेटेंट जो इस्तेमाल नहीं होता है, यू कैन ऑलवेज डू द रिसर्च, डोंट डिस्क्लोज इट। नॉर्मली क्या होता है, ले सकते 2-4 मिनट, वो मैंने इसलिए कहा, मैं जो करते हैं लोग, और चुप रहना सीखना है। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ थोड़ा सा। मैं जर्मनी में था, मेरे साथ जैपनीज था, उसके प्रोफेसर ने ही काम किया हुआ था व्हेन ही विजिटेड दैट इंस्टीट्यूट इन जर्मनी। मैंने कहा सर ये काम ऐसा नहीं, सोमा क्लोनल वेरिएशन का, आई डोंट नो, एंड ही वाज द ओरिजिनल पेटेंट पब्लिशर। कहता आई डोंट नो, आई डोंट, वो कुछ नहीं बोलते। आप जापानीज को देखेंगे, कोरियंस को देखेंगे, दे विल नेवर अटर ए वर्ड व्हेन यू आर टॉकिंग। सबसे ज्यादा पेटेंट उन्हीं के। कोरिया छोटी सी कंट्री है, आप सब सैमसंग ये वो सब उन्हीं के ले रहे हो, वो अपना काम दूसरों से सुनते, आइडिया लेते और काम करना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तानियों में प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली लड़कों आदमियों में, लड़की देखी नहीं होती इसलिए तो ये फैक्ट है। अपने घर की भी, मोहल्ले की भी सारी बातें मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और वो सारा आइडिया ले लेते हैं आपसे। इसीलिए मैंने कहा मैं करने की आदत है ना। आप चुप रहोगे तो कुछ नहीं बोलोगे, आप सुनोगे, आप बोलोगे, उन्होंने आइडिया ले लिया। एंड दिस इज द बेसिक सिस्टम इन यूरोप में। मेरे को जब रिसर्च करनी थी, मेरे प्रोफेसर ने गाइड करना बंद कर दिया, ये डू इट। उनका पॉइंट बड़ा क्लियर था कि क्या करना चाहते हैं। मैं 2 महीने सारी यूरोपियन यूनियन की लेबोरेटरीज में गया, उनसे आइडिया लिया। दैट्स व्हाई माय फर्स्ट पेपर्स व्हिच वर पब्लिश्ड इन थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड जेनेटिक्स एंड अदर थिंग्स, वो नया वर्ड था, उनसे आइडिया लिया, मैंने समझ गया था और काम किया। तो आपका आइडिया जो है ना, अपने अंदर रखिए। 6 महीने बाद है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ कि एग्जाम जो आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की ना, दे गिव यू 18 मंथ्स। 18 मंथ्स इसलिए देते हैं कि आप जानना चाहते हैं, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट कोई आपका अपोनेंट भी कर सकता है। जैसे बजाज का फैन है, तो दूसरी कंपनियों वाले भी तैयार है, बजाज ने पेटेंट फाइल किया, उन्होंने क्या नया किया है, दे कैन आल्सो फाइल फॉर रिक्वेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो आप विथड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपने जो इन्वेंशन किया दूसरों को पता ही ना लगे कि क्या आपने क्लेम किया। अगर आपको लगता हो सकता है इसका पेटेंट ना मिले, तो आपने जो स्मार्ट पेटेंट किया ना 4 साल बाद, अब टेक्निकल है, उसी की तो मैं कमाई खाता हूँ बोल बोल के। तो हाँ प्लीज। Sir, you told that therapeutic procedures they are non-patentable, but we can make some like कोई अगर हम कोई product बनाते हैं या कोई ऐसा instrument बनाते हैं जिससे कि किसी का treatment होता है, is there any way that would be patentable? प्रोटेक्टेड मशीन तो प्रोटेक्टेड है। नहीं सर, मशीन नहीं, जैसे मशीन नहीं बनाते, मान लीजिए जैसे हम जैसे आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, फॉर एग्जांपल आई मेक अ सॉर्ट ऑफ कोई स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट बनाना जो मशीन नहीं होती सर, जैसे डंबल है या कुछ इस तरह की कोई चीज हम डिजाइन करते हैं जो किसी थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज हो रही है। डिजाइन का तो डिजाइन में प्रोटेक्टेड है। आप तो जो वर्ड बोले मैं उसी पे हाँ, जवाब तो मतलब कर सकते हैं आप बात। हाँ, नॉर्मली क्या है, जैसे योगा पे है, हाँ जी, आपने सुना होगा योगा पे पेटेंट हुए हैं, बट नो पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड ऑन योगा। इट इज ओनली द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, जिसको न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, वो हर किसी को पेटेंट कह देते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल दूं, अपना ही, व्हेन आई वाज इंचार्ज फॉर उत्तराखंड स्टेट, जो डॉक्टर प्रॉय से पहले नहीं देख रहा था, बाद में काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गया, आई वाज लुकिंग, हमने अल्मोड़ा में जाके किया बाल मिठाई का, न्यूज़पेपर वाले ने निकाल दिया हिंदुस्तान टाइम्स में, छोटे मोटे नहीं। उसको मैंने कहा था कि लिखने से पहले मेरे को पहले भेजना कि तुम क्या टेक्स्ट भेजोगे, मेरे को फोन पे बता दिया बाल मिठाई हैज बीन पेटेंटेड। अरे पेटेंटेड होता ही नहीं है, इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड एज ए जीआई। अब उसको कौन पकड़े, उनको तो सब पेटेंट ही पता है, दूसरा वर्ड ही नहीं पता। इसी तरीके योगा पे नो पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड, देयर आर अबाउट 14 ट्रेडमार्क्स व्हिच हैव बीन ग्रांटेड। जब आप ट्रेडमार्क पे लेक्चर देंगे तब ये घंटा बोलूंगा मैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
Okay, thank you, Mata. वहाँ पे members के बैठे हुए हैं, okay. Any students you want to ask question? Any question from students? उनको भूख लग रही होगी खाने के लिए. Thank you so much, sir, for your valuable and informative lecture. Excuse me, sir. First two questions, like you have stated, Mike. so under section 3, okay, it says that a mere discovery of a new form of known substance which does not result in the enhancement of a known efficacy of that substance, right? So what does efficacy means over here? एफिकेसी का ये मतलब होता है कि जैसे एक ही कंपाउंड है, ड्रग का है. अब जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन इज ए पेन किलर जो भी है, उसके बाद उसने कहा कि इसका ये दूसरा भी यूज है, and then you say I get the patent right. That is not done. Okay. For example, there are two medicines. Okay. First medicine being it has been granted a patent that it will recover you within 10 years of period. And the second one, it has been granted a patent for that. But for the second medicines, now it is stating that it will be recovering you like for a period of 9 years. So will a patent be granted for the second one? पेटेंट ऑफिस में बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि शार्ट में जैसे तुम पूछ रहे हो ना, इस पे 100 पेज की पूरी गाइडलाइंस है. मैं तो शार्ट ने आपको बता दिया है ये करके, तो इसीलिए शार्ट में मैंने बताया कि एफिकेसी और ये चीजें जो है कोविड का, इसमें दे लुक फॉर ईच एंड इफ इट इज मोर देन 10-20% तब वो जाके पेटेंट राइट वगैरह में होता है, उस पर भी चैलेंज हो जाता है. क्योंकि दूसरे वाले भी बैठे हैं ना, मेडिसिन के जो पेटेंट के अपोज करने वाले, पेटेंट शुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन ड्रग्स. इंडिया में भी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में भी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंच नाम है पेटेंट साइंस फ्रंटियर्स करके, ऐसे करके. तो ये इतना टिकलिश इशू है, तो मैं यस और नो में तुमको जवाब नहीं दे रहा अनलेस एंड अंटिल आई हैव द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, देन ओनली आई कैन टेल यू. बट इन जनरल little bit efficacy, this thing and all those things you should forget that you will get it. Because these things are already known. मैंने एस्पिरिन का दिया, ये पेटेंट की गाइड बुक में भी एग्जांपल दिया, मेरी बुक में भी दिया हुआ है. पता नहीं है कि नहीं तुम्हारे पास है, तो उसमें देख भी सकते हो. शार्ट में मैंने एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि ज्यादा तो दे नहीं सकता, इट्स फॉर यूजी एंड पीजी लेवल, बट इट्स देयर. बाकी कुछ और कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन मेक ए कॉल एंड यू कैन. Thank you so much, sir, again. Now I would request Dr. Shalini Singh ma'am, Head Department of Biotechnology and member of the organizing committee, to present memento to our keynote speaker, Dr. S.S. Chawla. बंद कर दीजिए. हो गया कल सुबह चुने. जैसे फिल्मों में होता है ना, मुझे आगे रखना पड़ता है फोटो खिंचवाने के लिए. आप तो प्रोफेशनल है, जानते ही. मैं वैसे खिंचवाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मैं शीशे में अपनी फोटो हर रोज देख लेता हूँ, मेरे को क्या करवाना. थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, गुस्से में ही रहता हूँ. बस हो गया, परफेक्ट. Thank you so much, madam. Thank you so much, madam.
स्टूडेंट्स अभी बैठे रहे Students, please be seated. We are about to start our first technical session. Please be seated. You will have your lunch after this session. Please be seated. Don't leave the hall. Please be seated. Now we are starting with our first technical session, and for this we have a virtual lecture which will be delivered by Ms. Shalaka Rajiv Toil, who is partner IP Adventure. Hello. Can you hear me, ma'am? Hello. Hello. Can you hear me, ma'am? Yeah. Good afternoon. Am I audible to you? Yeah. Good afternoon. Audible to you, ma'am? Yes. So, can you hear me? Hello. Hear me. Good afternoon, ma'am. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. I'm Dr. Dipali. On behalf of the organizing committee, I welcome you to the 2 days workshop on intellectual property rights from 10 to 11th March 2022, organized by the Research Advisory Committee in association with Department of Pharmaceutical Chemistry and Chemistry, Dolphin PG Institute, funded by UCOS Dehradun. It will be a privilege for me to uh, introduce you to the audience. May I read your profile, ma'am? Yeah. Hello. So I'm reading your brief profile to the audience so that you are familiar with that. Ma'am has done her post-graduation in inorganic chemistry from University of Mumbai. She is an IPR coach, BYST mentor, SIPC felicitator for patent and design, a partner by designation and Indian patent agent by qualification and analytical chemist by training, carrying 10 plus years for versatile professional work, experience in research and development and IP management. Research and development wet lab work included analysis APIs on instruments like HPLC, GC, LCMS, IR. Patent management involves searching, analyzing, drafting, conducting non-infringement analysis, preparing landscapes and translating the prosecution of patent applications. She has good understanding of National Patent Office databases of USPTO, JPO, EPO, and IPO. Well conversant with
web-based patent systems, and typical architectures. She is a charismatic speaker who conducts IP awareness seminars and provides guidelines for career aspects in IP studies. She is an excellent communicator, presenter, and an innate leader. Being a good team player, I welcome ma'am to deliver her lecture and praise the audience. Thank you so much for this warm introduction, Dr. Tripathi ma'am. A very good afternoon to all of you. I know you people are hungry, but I will not keep you waiting for longer time. I'll just quickly finish whatever I want to tell you, and then we all can break for lunch. So, first of all, I would like to thank Principal Ma'am Dr. Shailija Pant, RAC Coordinator Dr. Varsha Ma'am, and Dr. Beena Ma'am, Please be seated. Everyone. who has been coordinating to me for this session. So, hope I am audible to all. So much for this. Very good to all of you. I know that you people are hungry, but I will not keep you waiting for longer time. I'll just quickly finish whatever I want to tell you, and then we all can break for lunch. So, first of all, I would like to thank yeah. So, what is intellectual property for me? So, I would like to play video initially. So, would request Veena ma'am to play the video. Hello. Yeah. So, first of all, I would like to tell you that we all are meeting virtually today. I'm sitting in the city of Pune, who is known as the Oxford of East, and यहाँ पे ही हम लोगों ने मैंने और मेरी पार्टनर पल्लवी कदम हम लोगों ने एक फर्म एसोसिएट इनकॉर्पोरेट की सितंबर 2019 में IP Adventure. The specialty is this is the one of its kind firm made for meant for empowering women. So it is a woman centric firm. I'm very proud to say about that. So whatever now starting with my presentation. So अभी हम लोगों ने देखा कि अमीर is defining what is machine. So extending that thought to IPR, मेरे लिए IPR वही है what is intellectual property or creation of a human brain. What is that? The property or the creation which makes human life easier. हमारा जो लाइफ आसान कर दे. राइट फ्रॉम द मॉर्निंग जब हम लोग उठते हैं तो राइट फ्रॉम टूथब्रश टूथपेस्ट पेस्ट से लेके रात को सोने तक मतलब AC with a click of a remote we switch on the AC and sleep nicely. We have a peaceful sleep. So यहाँ तक we get associated with so many types of intellectual property rights. So इतना हमारे लाइफ में उनका सिग्निफिकेंस है. तो why we are here to attend this session, or why am I here to attend this session or give this session to you. So ये मेरा बहुत ही favorite example है. Along with IPR coach, I am a housewife also. So I give this example. It is very easier to understand. Uh, Earlier we used to use this mortar and pestle for making chutney and grinding things, now which has been replaced by a mixer grinder, which makes it easier in saves our time. So in a way it is making our life easier. Similarly, washing machine. So there are so many products in our day-to-day life activities which we are using, which are easing our life. जैसे कि
if we see, human being was wanderer, and then he invented wheel, and then the journey was easier. He settled down at one place, then agriculture started, and then everything, uh, every step of evolution you people are aware of. So now, why IPR? So अभी IPR का importance क्या है? Now earlier we used to say, हमारे मराठी में एक proverb है कि ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते. म्हणजे इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ज्ञान की, नॉलेज की मोनोपोली नहीं रखनी है, किसी एक के पास ही नहीं रखना है, बट वो सबको बांटना है. दिस इज अवर कल्चर. But now we have seen that in this knowledge economy, it is getting evident to have a monopoly rights, or to protect whatever knowledge or whatever creation of my brain is there. I have to enforce rights which are arising due to my creation of mind or creation of brain. So in this knowledge economy, the intellectual property rights, protecting them and enforcing them, is getting day by importance, day by day. It is increasing, this importance is increasing day by day. So आपके लिए भी what is, how this IPR is related to your research, that we are going to see now. In the previous lecture, Dr. Chawla has explained the overview of IPR very nicely. He explained what are different types of IPRs, how the patents are applied, what are different documents required for patents, what are the fees. So very nicely he explained, but आई एम नॉट गोइंग टू गो इन मच डिटेल्स. मैं आपके फील्ड से रिलेटेड ही कुछ केस स्टडीज लेने वाली हूँ. एंड जैसे मुझे कहा गया था कि लॉ के बारे में कुछ बोलना है, बट देन आई डोंट वांट कि लॉ के डिफिकल्ट लैंग्वेजेस या फिर कुछ यहाँ पे बोलूँ. व्हाट इज ट्रिप्स, व्हाट इज WTO, व्हाट इज गैट. सो मैंने ये समझा कि आई विल टेल यू हाउ द लॉ इवॉल्व बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो उसके बारे में ही हम लोग दो केस स्टडीज लेने वाले हैं और देखने वाले हैं. वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज, एंड यू विल लाइक इट बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी. That's why you will, it will be very easier for you to understand. But before that, why IPR? तो ये हम लोगों ने सीख ली है. why अभी हम लोग कुछ साल पहले ही अवेयरनेस जनरेट होना चालू हुआ है. अभी भी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट IPR, not fully aware about IPR. In Maharashtra also, the highest number of patent filing is from Maharashtra. If we see a graph or a map of India, statistical analysis of India, कि patent filing कहाँ ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, but it is from corporate industry, not from academia. सो एकेडेमिया में लोगों को अवेयरनेस इतना नहीं है, मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है उनको, क्योंकि आफ्टर फाइलिंग अ पेटेंट, आफ्टर गेटिंग अ ग्रांट, व्हाट इज हैपनिंग विद दैट और व्हाट इज टू बी डन विद दैट, दैट इज नॉट, दैट इज दैट पर्टिकुलर कमर्शलाइजेशन का नॉलेज इतना स्प्रेड नहीं हुआ है. एंड दैट इज वाई एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स से पेटेंट फाइलिंग इज लेस. So people are happy that once they file a patent application and it gets published, people are happy in that कि उनके पोर्टफोलियो में या उनके CV में ऐड हो जाता है कि इतने इतने पेटेंट्स फाइल किए हैं. nobody is going to trace it कि कितने ग्रांट हुए हैं. and that person himself is not aware कि after grant क्या फायदा मिल सकता है, what are the monetary benefits he can get. So when we started learning or getting aware about this intellectual property right, ये फेमस बासमती केस या हल्दी टर्मरिक केस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि बासमती केस के बारे में क्या हुआ था कि राइस टेक वाज ग्रांटेड अ पेटेंट टू कॉल इट एरोमेटिक राइस ग्रोन आउटसाइड इंडिया. मतलब अमेरिकन कंपनी को बासमती एरोमेटिक राइस का पेटेंट मिल गया था तभी. एंड वेयर एज बासमती इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ GI. अभी पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, which means it is related to that particular environmental conditions. Some products, it is a community right, like we have अल्फांसो मैंगो, रत्नागिरी में अल्फांसो मैंगो जो होते हैं, that has got a unique taste. Why? Because there is a unique climatic conditions over there which are affecting the taste of the fruit. Similarly, in Pakistan and in North India, this basmati rice is grown, and this is the taste, the aroma, particular aroma, the size of the grain,
that all thing is affected by the environmental conditions, and hence it is the sole property of that particular region. Whereas this American company was granted a patent, and we have to fight back to get this patent revoked. And that is the this is the lesson we learned, and then we got aware, अरे हाँ सब कुछ intellectual property right करके है, and we should be aware of that, so that other people should not come and encroach our rights. So जैसे कि प्रॉपर्टी हमारी लैंड भी कुछ हम लोग कुछ पीस ऑफ लैंड वो करते हमारे नाम पे लेते हैं, तो व्हाट वी डू, वी फेंस इट सो दैट अदर पर्सन कैन नॉट कम एंड एनक्रोच ऑन इट और कुछ कंस्ट्रक्शन ना बना ले। वैसे ही हेलो या सो वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आपके ब्रेन का क्रिएशन है, दैट उसके वजह से जो भी आपको राइट मिला है, यू शुड लर्न टू प्रोटेक्ट दैट। Now, being in educational institute, you must be having the tendency to publish research papers. So कुछ research projects रहते हैं, या फिर आपके जो भी आप जब रिसर्च करते हो तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स पे आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते होंगे। बट सिंस नॉट वी आर नॉट अवेयर ऑफ मच अवेयर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वी स्ट्रेट अवे गो फॉर publishing a paper. So what happens, why we are not aware, or what is the disadvantage of filing a paper? So first of all, after filing a paper, this technology or whatever invention, if at all there is in your research, if the invention resides in your research, that is published all over, and then it is known to everybody, so it loses novelty. Now on research paper you will not get any right, so there is no opportunity of having monopoly rights on the research paper. So of course there is no revenue generation out of it, and it's a purely technical document. But whereas if you file a patent for it, you will get exclusivity right or monopoly right for the period of 20 years for that patent, and that invention will not be available for others to practice. Anybody else without your permission won't be able to practice that invention or perform that invention or get any commercial benefit out of that invention. And you have the sole right to license it to carry out technology transfer mechanism using that invention, and get monetary benefit out or generate commercial benefits out of it, and get benefited out of it. And since this patent is a techno legal document, legal meaning legally it is protected, patent act is there, which decides how this techno legal document should be written and how this should be submitted to the patent office. You need to disclose your invention to the patent office, in turn of which patent office will grant a protection of 20 years to you, or protection in the sense monopoly rights. सो दिस इज वाई वी से पेटेंट फर्स्ट एंड नॉट पेपर। तो आज से अब जब भी रिसर्च में जाते हो या फिर कुछ भी इन रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, तो प्लीज रिमेंबर, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स की first of all be aware of something called as patent. So whenever you are carrying out research, you first think, can I file a patent for this and can I get benefited? So once you file a patent and it gets granted, there are many ways of getting it granted and in a faster manner. We recently got a patent granted within not less than I guess within 6 months after publication of that patent document. So there are faster ways of getting grant, and after granting, there are many ways of getting it commercialized. Being a professor or being a student, I know individual inventors are not in the capacity of commercializing that, but we also, or there are other entities or agencies which are helping these individual inventors to commercialize their inventions. There are licensing opportunities which will help you to commercialize your invention. Now, this is the famous 3P statement of Dr. Raghunath Mashelkar. We all know him, eminent personality. So he was the foremost important person
in getting the turmeric patent revoked. So he always says patent publish and prosper. What does it mean? So early, this is what is happening is your people are publishing their research work. They are not, of course, after publishing there is a foremost criteria for patentability, that is novelty. So it should not be known to anyone. It should not have been published anywhere else. So this novelty criteria is killed once you publish the paper, and hence you cannot go and file a patent for that particular invention. So it is better always to patent that invention, and then you can research paper publish a paper for that. And since you have filed a patent, you will have the commercialization rights, and hence you will be prospering. So this is why he is saying patent publish and prosper. So there are a couple of inventors who approached us. So they had published their research paper, and later on they got that thing कि हाँ अरे इसका पेटेंट कर सकते थे, तो अभी क्या कर सकते हैं, इसका पेटेंट करना था हम लोग को, मैडम इसका पेटेंट करना था, तो हम लोग को तो मालूम नहीं था, तो क्या करें अभी. So there are certain sections or the what you can say privileges in the patent act ki, if there are certain privileges which will allow you in a specific time limit, if at all you publish the paper in a paper in research as a research publication. So with the help of those sections we filed their patent for their invention, and that patent got granted recently. So there are certain privileges, but the time limit भी है उसके लिए. तो within that time limit itself you have to file, you have to approach patent agent, or if at all you are filing on your own, तो पेटेंट आपको उसी टाइम लिमिट में ही फाइल करना है. एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज सेक्शंस पेटेंट एक्ट. तो आप तो रिसर्च करने वाले हो, तो पेटेंट एक्ट के बारे में आपको मालूम नहीं हो सकता है, तो बेटर यू अप्रोच एनी गुड पेटेंट एजेंट हु विल गाइड यू रिगार्डिंग दिस. Now, intellectual property is basically is of two types. Literary artistic work, as sir said, copyright कि मैंने बुक लिखा तो उसका मुझे कॉपीराइट मिलेगा. मैंने कुछ फोटोग्राफ्स की क्लिक किए हैं तो उसका कॉपीराइट मिलेगा. कुछ स्कल्पचर्स किए हैं तो इट इज एलिजिबल फॉर कॉपीराइट. मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है तो फिर इंडिया में मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रोटेक्टेड एज अ कॉपीराइट एंड नॉट नेवर, इट इज नेवर प्रोटेक्टेड पेटेंटेड. Why? Because method of treatment का कोई भी पेटेंट नहीं ले सकता. It cannot be a monopoly right of a sole company or a inventor. Sole person का वो monopoly right नहीं हो सकता, because it may affect other people. So those who have not method of treatment से जिनको फायदा होने वाला है, तो अगर पेटेंट लेते हैं तो पेटेंटी जो है जिसके पास वो पेटेंट है, he may charge huge amount for carrying out that treatment. So this is not allowed in India. So India का patent act कैसे है, that I am going to tell you in a brief later on. But now for this for now it is literary and artistic work is protected under copyright. And इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज मीनिंग जैसे हम लोग ने देखा था, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन है. So these are all industrial properties. So those products out of your human creativity which can be commercialized, which can be industrialized, those come under industrial property. So कॉपीराइट मतलब एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया. जैसे मैंने पोएम लिखी है, म्यूजिकल कंपोजिशंस है, या फिर पेंटिंग्स है. सो दीज ऑल और थिंग्स विल गो अंडर कॉपीराइट. These are 6 types of industrial properties in India. Now focusing on patent. What is patent? So as I said, it is a monopoly right. It is a problem solution relationship. So whatever if there is a problem, जैसे कि we were not able to move the things easily when we in the early human stage. So human invented a wheel. So this made his life easier. So there was a problem, some problem, and then he found out solution. So this is a problem solution relationship, and hence this such kind of solution can go for can be a subject matter of patent. So the term that is
how much time your patent protection is valid is for 20 years. In India, you cannot renew your term of patent. Maybe in US, there is a facility of continuation in parts, or they can go on filing these patents, and their monopoly rights are getting extended. But in India, it is not allowed, as Sir said, Section 3D. So, since in US 3D is not there, so new use of a known substance is also patented, and this is how they can keep their monopoly rights continued even after expiry of the parent patent. Now, criteria for patentability. So, whenever an inventor approaches us, हाँ ये मेरा invention है, I want to file a patent for this. So directly we cannot go and file a patent for that invention. We have to check whether इसके जैसा ही invention. Sometimes कुछ Google search करके पढ़ा होता है, and based on that कुछ invention होते हैं, किसी का copy कर लेते हैं, कुछ किया है क्या, ये these all things we have to check. So novelty meaning newness. So it should be new, it should not be known to anybody throughout the world, not only in India. Although you are filing in India, no, these criteria are throughout the world. These criteria are checked throughout the world. You will get protection only in India once you file in India, because the protection is territorial. That is, if you file in India, you will get only in India. If you file in US, you will get only protection in US. So the intellectual property right protection is territorial. But novelty criteria, whenever it is checked for throughout the world. So no, it is novel or not, that has to be checked. Then inventive step, whatever technology is available right now, it should be one step ahead of that technology. That is called as technological advancement or technical advancement. So if it is not there, technical advancement, then your invention is not patentable. If it is not novel, then your invention is not patentable. Industrial applicability, what does it mean? Some inventions are workable only on prototype level. So if you try to commercialize it, it will not work in terms of cost, in terms of feasibility. So if it is like that, then there is no point in granting a patent on that invention. And hence this is also a foremost important criteria of patentability. So novelty, inventive step, and industrial applicability are the three important criteria. Apart from that, in Indian Patent Act, there is Section 3 and Section 4, which add additional filters to the patentability criteria. So we are not going to see Section 3 and Section 4 in detail here. Now, what can be patented? So invention, obviously invention can be patented, because that is what you have created out of your intellect, not discovery. Discovery is something which is existing in nature, you just have found out it. It was not known to anybody, you just have found out. So that cannot be given a monopoly right. Whatever is existing in nature, you cannot get monopoly right for that, right? So whatever you have researched, or you have done carried out a research and you have invented, for that you can get patent. As I said, problem solution relationship, anything which has this kind of relationship will get a patent. So, for example, product, washing machine, any new medicine, system, apparatus, these all are subject matter of patent, and as well as process. Any product, उसको बनाने की जो process है, so you have made some process which is making that product in a less time. It is not requiring any heat, external heat supply, or maybe it is cost effective. So these all process, this such kind of processes can be patented. Now, in particularly biomedical research may, what cannot be patented? So natural unaltered DNA sequence cannot be patented, whether from virus, bacteria, plant, animal, or human. So DNA sequences which are already there, but you have just separated them out. We are going to see a case study, famous case study on that. So these sequences cannot be patented, but you, if you have carried out some modification using your intellect, then it might be patented. For example, natural proteins and chemicals from nature without modification. Why? Because this, when you modify it,
there involves human intellect, and hence it becomes patentable. But if the naturally existing proteins and chemicals, you just have identified them, you cannot go for filing a patent for the same. Now newly discovered this peyote chemical that reduces anxiety. So this is a kind of a spineless cactus which is found, the ingredient of which is found to reduce anxiety. But then if we go for filing a patent on this, we have just identified maybe extraction method. So method of extracting this chemical out of this plant may get a patent, but this chemical cannot get patent because this is already existing in nature. So we won't be able to file a patent on this. What can be patented? Examples of inventions in research that can be patented: genes and DNA sequences spliced together. You are better, you may be in a better position to understand this. Devices and products for practicing. So devices, products for practicing using medical methods. So device, any kind of device, may be able to, you will be able to patent that device or products, but not the method of treatment. Again, I am telling you, not the method of treatment. So these novel scientific and technical ideas that I have told you, who can file a patent? Individual or natural person can file a patent. A company can file a patent. A small entity, that is MSME, can file a patent, and a startup can file a patent. File a patent as in these all can be applicant of the patent and not inventor. So there is a slight difference in applicant and inventor. Inventor is always a natural person. Inventor is a person who carries out actually the research and invents something. So he has to be natural person. He cannot be a legal entity, or he cannot be a company, because company cannot carry out research. It has to be a natural person. So inventor is always a natural person. But applicant, now who is applicant? Applicant is a person who has all the patent rights. So who is able to commercialize the patent? Who is the entity who is going to get the commercialization benefits of the patent, granted patent? So applicant can be individual, that is natural person, or it can be a company, it can be MSME, it can be startup. In fact, in India, there are many facilities for startups to enhance their IPR filing. So these are the four jurisdictions in for patent filing in India: Mumbai, Chennai, New Delhi, Kolkata. So whenever you go for e-filing of the patent and you put the address of the applicant, automatically the appropriate jurisdiction is selected. Now, if you, there are two types of, basically ordinary patent application is of two types. First is provisional and complete specification. So when can you file provisional specification? Now आपका research complete नहीं हुआ है, but आप चाहते हो कि उसका patent file करे. So that time you can go for selecting or protecting the priority. Protecting the priority, meaning in India we follow first to file is first to get the patent, or first to get the probability of patent. There are two inventors carrying out research in the same field, and if they want to file patent for same invention, but the one who goes first and files first, the probability of getting the patent granted to him is more than the other one. So first to file is first to get. So whenever there are certain some inventors approach us and saying that I want to file a patent, but मेरा research complete नहीं हुआ है, मेरा 30% ही हुआ है, 70% बाकी है. तो we will advise them कि हाँ चलो हम लोग provisional करते हैं, and then we get a time frame of 12 months. So within 12 months you have to complete your research and file the complete specification. So this is what provisional and complete specification. This is the facility given for the people or researchers if their research work is not complete and still they find want to file patent application. Now this is the prosecution flow chart, or how the patent proceeds, patent application proceeds once you file it.
So once you file the patent application, it is screened based on the field of invention and abstract whatever is written for the patent application. Based on that, the appropriate field is classified or identified. Screening and classification is done, and then there are two categories. As I said कि faster route भी है grant का, तो faster route मतलब क्या, तो अर्ली पब्लिकेशन होगा उसका, रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन भी अर्ली होगा, एंड देन it will get granted in a faster manner. सो नॉर्मल केस में आफ्टर 18 मंथ्स योर पेटेंट एप्लीकेशन इज पब्लिश, और फिर उसके बाद 48 मंथ्स में आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डालनी है, रिक्वेस्ट करना है पेटेंट एग्जामिनर को कि भाई मेरा पेटेंट एप्लीकेशन देखो, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है तो मुझे बताओ, एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड टू दोज ऑब्जेक्शंस, एंड देन मेरा पेटेंट ग्रांट हो जाएगा. सो दिस नॉर्मल कोर्स में विद इन 48 मंथ्स यू हैव टू रिक्वेस्ट द एग्जामिनर. बट इफ यू वांट कि फास्टर ग्रांट मुझे चाहिए, फास्ट फास्ट करना है मुझे कमर्शियलाइजेशन, देन आपको जब फाइल करते हो पेटेंट एप्लीकेशन, दैट टाइम इटसेल्फ आपको अर्ली पब्लिकेशन के लिए रिक्वेस्ट फाइल करनी है, क्योंकि पब्लिश नहीं होगा तो एग्जामिन भी नहीं होगा. तो पब्लिकेशन के लिए रिक्वेस्ट फाइल करनी है आपको, और रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन भी तभी फाइल करनी है. तो विद इन अ मंथ्स टाइम योर एग्जामिनेशन रिपोर्ट विल बी जनरेटेड, and then you will get 6 months time to respond to that examination report, and then उसके बाद आपका hearing होगा. Hearing, अगर examiner is satisfied, then there won't be any hearing. Recently our patent application got a grant without hearing. So ये hearing होता है तो उसके बाद patent grant होता है if examiner is satisfied. Once you submit the examination response to examination report, then also he might grant your patent application. Now, these are the timelines to be followed, but then I don't think right now it is of any importance. Now, this sir already has told you. Now, there are two ways of filing, normally e-filing and physical filing, but nowadays nobody goes for physical filing. सब लोग e-filing ही करते हैं. Is I told you second filter, yeah. So now trips, you might have read trips on sir's slides, वहाँ पे heading था trips. So what is this trips? So this is trade related aspects of intellectual property rights. So this is an agreement between among all the countries, all the member countries in the world. सो हु फॉलो ट्रिप्स, इट गिव्स बेसिक फ्रेमवर्क एक देता है कि पेटेंट एक्ट आपका कैसे होना चाहिए. उसी के हिसाब से वो लिखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पेटेंटेबल, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पेटेंटेबल, या फिर जीन्स विच आर आइसोलेटेड आर नॉट पेटेंटेबल. सो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क दिया है ट्रिप्स ने कि ऐसे ऐसे आपका पेटेंट एक्ट होना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, हर एक कंट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका पेटेंट एक्ट डिजाइन किया गया है, विच इज कॉल्ड एज, you can say this word, sui generis type of patent system, which means that every country has got their own uniquely designed patent act. जैसे we have section 3 which is not there in any of the other countries patent act. So section 3, as I said earlier also, ki adds more filters on patentability. So this is for the benefit of the common public, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पब्लिक. पेटेंट जो भी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने पेटेंट एक्ट बनाया है, दे हैव एडेड दिस सेक्शन 3. Now, this was the famous case. Now we are going to see how the Patent Act evolved. So earlier they said कि microorganisms are not patentable. Now Dr. Anand Chakravarti, he is the scientist from Indian origin, genetic engineer of Indian origin, and he developed a bacteria which used to eat up the oil spills from the ships. And he genetically modified and he developed this bacteria. So initially the patent was rejected. Why? Because according to Patent Act, living organisms are not patentable, and hence it was rejected. So no, the now salient features of this patent application were, patent was filed on genetically modified bacterium. So now this genetically modified meaning there is somewhere human intellect was involved in this genetic modification. It was intentionally modified so that that bacteria could act on the oil spills. So there was some problem, and
the solution was out of human intellect, and it was not just discovery that this bacterium was found to act on oil spills, and hence he wanted to file a patent for that. No, it was not like that. He intentionally modified the genetic code, and he prepared that, developed that bacteria. So Supreme Court from US decided that patent holder created the bacteria and described in the proposed patent. So there are no legal grounds to dismiss the claims, and hence later on the patent was granted on 31st 1981. This was in 1981. So genetic technology, when the patent acts were designed in earlier time, that time genetic technology was unforeseen when the law was enacted. So that time it was not known ki this much advanced the technological developments will go, and hence it was not foreseen ki we should we should give or we should include this genetically modified organisms under patentable subject matter. So this was not foreseen, and hence the act was not allowing the living organisms to patent, and hence initially this patent was rejected. But later on, Patent Act got amended, and then they identified, or they came to know that this is something which is technological advancement. This is a part of human intellect, and hence it got granted later on. Now, what are the consequences of Diamond versus this case is called as Diamond versus Chakravarti because Diamond was the patent attorney, and Anand Chakravarti was the person who invented or who applied for the patent. And so after this case, it was decided by in US that anything under the sun made by the man is patentable. In US, it is still the criteria: anything under the sun made by human being is patentable. Now in India, it is not like that. You have to pass the section 3 filter for your invention to be patentable. Now after this new era of patents on drugs, microorganisms and processes to make such drugs using genetic engineering started. So, as I said earlier, also discovery refers to act of finding out something which is already in existence. You just have identified that this thing is existing here. It is not invention. Whereas invention is creation or designing of a product or a process which never existed before. So now this is myriad case, famous myriad case. Why I told why I highlighted again discovery and invention, that will come to know. Now this is BRCA genes which are responsible for breast cancer, but they are present in all human beings. These genes are present in all females, but then they are responsible for regulating cellular growth, repair damaged DNA, and help and suppress tumor growth. But if these genes are mutated, so when there are chances of breast cancer, so for normal female with these genes, only 12% chances are there. But if the BRCA1 gene is mutated, then the chances become higher. That is 72% of developing breast cancer are there, and if BRCA2 is mutated, then 69% chance of developing breast cancer is there. But not just breast cancer, but then also ovarian cancer, pancreatic cancer, and several other cancers are also. There are chances of getting these women affected with cancer, these kind of different cancers. So now what is this BRCA1 and BRCA2? So these are the parts of chromosome 7, BRCA1, and chromosome 13. You people are more knowledgeable in this era than me. I'm just telling you the difference between discovery and invention, and not go in much detail of this genetics. Now, normal genes, these are normal genes, tumor suppressor genes, which prevent cancer. If their first mutation makes them susceptible to cancer, and second mutation leads to cancer. Now, Myriad initially got this patent granted. So, identifying mutation. So, they identified that these BRCA1, BRCA2, why breast cancer is there in women. So, after if these genes are mutated, then women may have
breast cancer. This was the identification by Myriad, and they got patent for this. So Myriad Genetics, in collaboration with University of Utah, were the first to sequence BRCA1 gene and then applied patent for that, and then got the patent granted. But what are the implications, or what are the consequences of these granted patent? So BRCA1 and BRCA2, patenting these two genes violated patent act, as they are the, because these are, as we have seen, these are the products of nature. So these are already existing. They just identified that if they are mutated, then maybe there are possibilities of that female getting cancer. So considering the fact that human genome should be available freely for further research, because if they are getting the patent for these two genes, nobody else will be able to work on these two genes and carry out research for the treatment of breast cancer. So this is not allowed, and hence this patent got revoked. So, with that, after seeing these two case laws, we'll come to know how the Patent Act got evolved over the time period with the advancement of technology. So, this is my quick presentation, and now you can ask queries not on genetics, only on patents or IPR. So, if you have any queries, you can ask. Thank you so much, ma'am. Yeah. Any queries? Any queries, students? Any queries from the students? All are hungry and want to go for lunch, I guess. Thank you so much, ma'am, for Yeah. giving your and sparing your time with all of us. On behalf of the organizing committee, I thank you again. Thank you so much for giving me this opportunity.